Sir, let me know once we are live. Just a minute. Sir, let me know once we are live. Just a minute. Yeah, we are live now. Okay. Thank you, sir. Thank you. Hi, everyone. Welcome. Good evening to all. I am CA Neha Agarwal, General Secretary of Voice of CA. I welcome you all on behalf of Voice of CA. Thank you for joining us on a Monday evening. I know Mondays are the most difficult, Puni Monday, right? Today, Voice of CA has brought you a niche topic on challenges in GST litigation in intermediary service industry and export industry. And we have amongst us very entrepreneuring and young speakers with us today. We have CA advocate Ayush Agarwal here for the first session, whose area of expertise is IDT litigation, advisory and audit, and GST due diligence and compliance review. He has over 10 years of experience in the field and has done stints under the best at AK Batra & Co. and Lakshmi Kumaran and Sridharan. He would be taking up the intermediary service sector today. Happy to have you on Voice of CA, Ayush. Over to you. Thank you so much, Neha. That was a really lovely introduction. And I would first of all like to thank VOCA team for giving me this platform to present my views before the various participants, my CA friends and colleagues. मैं कोई भी सेमिनार या कोई भी वेबिनार में जब भी शुरुआत करता हूँ, मैं स्टार्टिंग में एक चीज बोलता हूँ, I am not an expert in this topic. We all are learning. It is just that I have prepared few slides, nothing else. You may be knowing more than me. We are here to discuss the provisions. We are here to clarify each other's doubts. And most probably, I'll try to gain something from you all, which I have missed out in my presentation. So, the topic that have been assigned to me, or I would say self-assigned by me to me, is intermediary services. I hope my screen is visible. Yes. Practical challenges in relation to intermediary services. So first of all, why there are practical challenges, or what are the practical challenges that are there in intermediary services? The first question is what? The second is why? And third is what has been the jurisprudence till now, or what is the law that has evolved till now? We will deliberate on all these three topics one by one. First of all, to understand that what are the practical challenges, we need to understand what is export and particularly what is export of services. I'm sorry, Akshay and Shivashish, that I am trespassing into your area, but I'll just quickly pass upon the reference so that you can take on what is exactly export and export of services and export of goods. To understand what is export of goods, there are 5 criteria that are defined. First is the supplier of service should be in India. The recipient of service should be outside India. The location of supply should be outside India. Money should have been received in convertible foreign exchange. And it is not a transaction between merely a distinct person. These 5 are the conditions defined under Section 2, Clause 6 of the IGST Act. If any of this condition is not satisfied, you cannot say that your services are export of services. Location of supplier of services India, I'll not discuss that. Maybe Akshay and the other team will discuss. Location of the recipient of service outside India, I will again not discuss it. Let's say that these conditions are fulfilled in our case. Third, money has been received in convertible foreign exchange. Let's say that it has also been fulfilled. And again, it is not a transaction between merely distinct persons. So what is remaining to be discussed over here is that the place of supply should be outside India. Place of supply, as you all know, is defined under Section 12 and Section 13 of the IGST Act. Section 12 again applies where both the supplier of service and the recipient of service are in India. And Section 13 applies where supplier of service or recipient of service or both are situated outside India.
Our major concern area in the just a second. Major concern area in today's presentation is Section 13, subsection 8, clause B, which talks about intermediary services. I think there is some problem. मेरे PPT slide नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं हाँ, आगे नहीं बढ़ रही. just a second. I'll just reshare, huh? हाँ. Yes. So Nice. the Okay. relevant provision under the GST Act, or I'll say IGST Act, is Section 13, subsection 8, clause B, which talks about intermediary services. So the place of supply of the following services shall be the location of the supplier of service is the opening line of Section 13.8. That is A, B, C, D, whatever the clauses are in subsection 8. In all those services, the location of supplier will be treated as the place of supply. So if the location of supplier is India, then the place of supply will always be in India. And then Section 2, Clause 6, export of services, definitions, conditions will not get fulfilled. And it will be treated as domestic supply only. Now, what is intermediary service exactly and why there are so many issues in this? So first I'll read the definition which is defined under Section 2, Clause 13 of the IGST Act again. Intermediary means a broker or an agent or by whatever name called who arranges or facilitates the supply of goods or services or both or securities between two or more persons, but does not include a person who supplies such goods or services or securities on his own account. ये तो एक लॉ की डेफिनेशन थी. अब इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस. Intermediary means a broker or an agent. Who is an agent and broker? We all know a person who represents us in front of another. Say we are purchasing a house. So our agent will go and represent us in front of the buyer, in front of the seller, that I'll negotiate you on behalf of the buyer. I'll finalize the price and then I'll bring the buyer and help facilitate this sale. An agent is someone to whom we have given some authority to do an act on our behalf, and we take full responsibility of the actions done by the agent on our behalf. Again, an agent or a broker or by whatever name called. So whatever the agreement may be, whatever you have written in that agreement, if the nature of that person is in the nature of agent, or it fits within the four corners of the definition of agent, then first condition of intermediary service is satisfied. Second is who arranges or facilitates the supply of goods or services or both or securities. So even securities are covered under this definition of intermediary services. So even if you are arranging or facilitating the supply of securities, even though securities may be outside the scope of GST, but arranging or facilitating the sale of those securities is under the ambit of intermediary services. So again, the question arises, what is the meaning of arranges or what is the meaning of facilitate? ये दो टर्म जो हैं वो इतने वेग हैं कि जीएसटी लॉ में इनको कहीं भी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन नहीं किया गया है. अरेंज मींस क्या है? अरेंज मींस मे बी आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट अ supplier for my client situated outside India. Maybe I am finding out a buyer for my client who wants to sell in India, situated outside India. So am I arranging something for him? Or what do we mean by facilitate? मैं एक दो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कैसे करता हूं?
maybe I am advertising on behalf of my buyer outside India so that the sellers in India or the customers in India are able to know that there is some brand outside India who wants to sell in India. Maybe मैं अपना ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए एक इंडिया में हूँ, एक फॉरेन बायर का, एक फॉरेन सेलर का ब्रांड इंडिया में प्रमोट कर रहा हूँ so that its brand gets recognized in India and that brand gets many orders. What do we mean by this word facilitate? Then the definition says does not include a person who supplies such goods or services or securities on his own account. तो ये चीज तो क्लियर है कि जब मैं वो गुड्स बेच रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द ओनर ऑफ दोस गुड्स और आई एम सप्लाइंग दीज सर्विसेज टू यू. दीज सर्विसेज आर बीइंग सप्लाइड बाय सम अदर पर्सन टू द थर्ड पार्टी. तो ये डेफिनेशन पढ़ के जो हमें समझ में आता है, ये आता है कि यहाँ पे देयर मस्ट बी थ्री पार्टीज दैट शुड बी प्रेजेंट इन अ ट्रांजेक्शन टू बी कॉल्ड एज एन इंटरमीडियरी सर्विस. Three parties and two supplies. So say A, B, and C are present. A is the supplier, C is the purchaser, and B is the one who is arranging or facilitating that supply. A is situated outside India, B is situated in India, and again, C is also situated in India. So transaction between A and C and transaction between A and B, there should be at least two supplies in order to qualify any one of the supply as the intermediary supply. And intermediary supply is never the main supply of goods or services. It is always an ancillary supply. Ancillary means that it aids or it helps in the provision of the main supply. So how does my service aids or helps in the provision of the main supply? And when do I call that it is an intermediary service? We will take 4 illustrations. ये चारों illustrations circular में ही हैं. Circular number 159, that also we will discuss. But ये 4 illustration क्या हैं? Supplier A, situated outside India, manufactures and sells machinery. He appoints C in India to find out the customers on his behalf in India, negotiate the price, sell that machine in India, erect and commission that machine in India, and then also do the AMC contract. C identifies B as one of the buyer of those machines, persuades B to buy those machines, negotiates the price on behalf of A sends those machines to B, B erects, commissions those machines at the premises of C, and the services of AMC are also supplied. So whether C is acting as an intermediary of A or not is the first question. Or I can say that whatever C is doing is export of services because the services of C are ultimately consumed by A and not B. One principle that we should not forget is GST is a destination-based tax. Yes, there are place of supply rules separately defined, which may or may not have bypassed the destination-based tax principle. But we have to understand that the basic object of the GST is that it is a destination-based tax. Services of C in this example are consumed by A who is situated outside India. So can I say that C has exported the services, or do I have to go by section 13 subsection 8 clause B, intermediary services? Second illustration is of a software company where A contracts B in India to manufacture, to code one software and supply custom made software for A. B subcontracts that work to C and ask C to get in touch with A directly and deliver them the software. Can I say that B has supplied the intermediary services or C has supplied the intermediary services? B has arranged C and asked them to provide those services to A, although B has subcontracted those services.
So C will always raise a bill on B, and B in turn will raise its bill on A. But can I say that since the services are provided by C to A, so B has provided the intermediary services? Third example is of an insurance company. An insurance company who wants to sell some insurance in India appoints one agent and asks that agent, or appoints one person, let's not use the word agent, appoints one person and asks that person to find out a company in India who is also into the insurance business so that we can collaborate and sell insurances in India. Again, the person who is identifying that company, insurance company in India, can he be said to be an intermediary? Correct. So these are the illustrations that we will work upon, that we will discuss. First of all, we need to understand the history or the background of these provisions. This issue is not new for GST. This issue has been prevalent since service tax regime. Service tax regime में you all must be aware, आप सबको पता होगा कि 2012 तक 30 जून 2012 तक पॉजिटिव लिस्ट थी जहां पे जो सर्विसेज डिफाइंड थी केवल वही टैक्सेबल होती थी. 1 जुलाई 2012 से पॉजिटिव लिस्ट आई एंड ऑल द सर्विसेज वर टैक्सेबल एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड इन द नेगेटिव लिस्ट. तब प्लेस ऑफ प्रोविजन रूल्स 2012 आए जहां पर रूल 9 में अगेन दे सेड दैट द प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ एन इंटरमीडिएट सर्विसेज विल बी the location of the supplier of service or the location of the location of the provision, location of the supplier who's providing those services. So the issue is not new over here. एक बार अगर हम जीएसटी के प्रोविजंस पढ़ते हैं, सॉरी सर्विस टैक्स के प्रोविजंस पढ़ते हैं, तो सर्विस टैक्स के प्रोविजंस जस्ट सर्विस टैक्स के प्रोविजंस अगर हम पढ़ते हैं तो सर्विस टैक्स के प्रोविजन 1/7/2012 से 30/9/2014 तक डिफरेंट थे और फिर अक्टूबर 2014 से उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट आया. अक्टूबर 2014 से देयर वाज एन अमेंडमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ द इंटरमीडिएट सर्विसेज. तो 2012 से सितंबर 2014 तक केवल जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में फैसिलिटेट करेगा, प्रोविजन ऑफ सर्विस में फैसिलिटेट करेगा, that person was only said to be an intermediary services. But from October 2014, a person who is again helping in the supply of goods as well will also be called as an intermediary services or was also called as an intermediary services. ये हमारा definition में छोटा सा change था. But अगर हम definition पढ़ें as on 1st October 2014, it is more or less similar to the definition that is under the GST Act as of now. What is the definition? Intermediary means a broker, an agent, or any other person by whatever name called, again, who arranges or facilitates a provision of service, hereinafter referred to as the main service, or supply of goods between two or more distinct persons, but does not include a person who provides the main services or supplies the goods on his own account. इसको अगर हम कंपेयर करेंगे जीएसटी के डेफिनेशन से, एग्जैक्टली सिमिलर है. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट डिफरेंस एक्सेप्ट दैट जीएसटी में सिक्योरिटीज को भी इंक्लूड कर लिया, सर्विस टैक्स में सिक्योरिटीज इंक्लूडेड नहीं थी. अदरवाइज अ ब्रोकर और एन एजेंट बाय व्हाटएवर नेम्ड कॉल्ड arranges or facilitates and does not include a person who supplies those services on his own account. तीनों prelims सेम है. सर्विस टैक्स में एक एजुकेशन गाइड आई थी जहां पे इन सर्विसेज को डिफाइन किया था. बेसिकली इंटरमीडिएट सर्विसेज को बताया था कि व्हाट आर द इंटरमीडिएट सर्विसेज. एजुकेशन गाइड का पैरा 5.9.6 में, ये आपके स्क्रीन के सामने है, मैंने बहुत ही रेलेवेंट चीजें बस हाईलाइट करी हुई हैं, बोल्ड करी हुई हैं. जनरली एन इंटरमीडिएट इज अ पर्सन हु अरेंजेस और फैसिलिटेट्स अ गुड्स, facilitates a supply of goods or a provision of service or both between two or more persons without material alteration or further processing. मतलब कि as it is वो सप्लाई होती है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, because there are two supplies
One is the direct supply, second is the ancillary supply. तो जो मेन सप्लाई है या जो डायरेक्ट सप्लाई है उसमें कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग या फर्दर कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होता है, एज इट इज नेचर की सप्लाई होती है, फर्स्ट. Second, an intermediary is involved with two supplies at one time. One is the supply between the principal and the third party, and the second is the supply of his own services to the principal, for which a fee or a commission is charged. तो एक 3-4 पैरामीटर्स भी दिए थे एजुकेशन गाइड ने हमको कि किस तरीके से हम इंटरमीडिएट सर्विसेज के स्कोप को अंडरस्टैंड समझ सकते हैं. इसमें बेसिक जो एजुकेशन गाइड ने ले डाउन किया था, मैं आज डिस्कस कर लेता हूं. वो था नेचर एंड वैल्यू. दैट इज अगेन इंटरमीडिएट कैन नॉट ऑल्टर द नेचर और द वैल्यू ऑफ दो सर्विसेज. अगर 1,000 रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड होनी है तो 1,000 रुपए की ही होंगी, 1,000 रुपए के गुड प्रोवाइड होने हैं तो 1,000 रुपए की ही होंगे. बीच में अपना कमीशन का बिल जो भी होगा वो इंटरमीडिएट अलग से देगा, फर्स्ट. सेकेंड, देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ वैल्यू, मतलब कि जो मेन सप्लाई है और जो एंसिलरी इंटरमीडिएट की सप्लाई है उन दोनों की वैल्यू में सेग्रीगेशन होगा. सो वंस अगेन, मेन सप्लाई की वैल्यू अलग होगी, एंसिलरी सप्लाई अलग होगी, दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगी. This is one more criteria to identify intermediary services. Third is identify and title. Identify and title will always with the principal. Intermediary will never say that I am providing these services on my own account. Again, then he will not be qualified as an intermediary. He will always say that these services are provided by the principal and I am merely an agent. Intermediate does not have the title to provide those services or to supply those goods. He does not hold any ownership on those goods or services. तो these were the basic 3 conditions जो एजुकेशन गाइड में थी. बट इतना डिटेल्ड एजुकेशन गाइड होने के बाद भी प्रॉब्लम क्यों आई? What department started doing is a mere marketing service. They started qualifying it as an intermediary service. A mere brand promotion service. They started qualifying it as an intermediary service. BPO, business process outsourcing, call center outsource कर दिया. They again started calling it as an intermediary services. तो the same issue continued in GST regime, क्योंकि GST regime में भी सेम डेफिनेशन थी. जब GST लॉ लाया गया, मॉडल ड्राफ्ट GST लॉ में तो अलग से प्रोविजन 13(8) कुछ था ही नहीं, इंटरमीडिएट सर्विस थी नहीं. बट जब फाइनल GST लॉ आया तो उसमें 13(8) क्लॉज बी में इंटरमीडिएट सर्विस इंक्लूड कर दिया गया. एंड अगेन द इश्यूज कंटिन्यूड इन GST regime एज वेल. एज इट इज सर्विस टैक्स के इशू की इवन व्हेन what I am doing is the business process outsourcing. मैं merely calls handle कर रहा हूँ, queries solve कर रहा हूँ customers की. Department said I am an intermediary. मैं merely customer के behalf पे marketing कर रहा हूँ या फिर मैं केवल potential customers identify कर रहा हूँ एक foreign supplier के लिए. If I am identifying only potential customers that may or may not materialize at the end, can I say that I am providing an intermediary service? और क्या मैं ये बोलूं कि मेरा जो रेम्यूनरेशन है अगर वो फाइनल सेल पे डिपेंड करता है तो आई एम प्रोवाइडिंग एन इंटरमीडिएरी सर्विस. से सपोज 10% ऑफ द वैल्यू एक्सपोर्टेड, 10% ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड. Does my remuneration affects nature of my service or not is again was considered by the courts and beautifully explained in 1 or 2 judgments. GST लॉ में भी सेम प्रॉब्लम आई. इसके लिए एक सर्कुलर आया. सर्कुलर में अगेन इंटरमीडिएट के स्कोप को क्लैरिफाई किया गया. बट सर्कुलर आना ना आना वाज सेम, बिकॉज अगेन एट द एंड दे रोट वन लाइन कि the above illustrations or the above facts are just illustrative, they are not inclusive, they are not exhaustive.
whether a service is an intermediary service or not will depend upon the fact of each case. The department started applying their own facts and started issuing notices again. तो ये सर्कुलर का आना या ना आना एक ही बराबर था. इसमें भी डिपार्टमेंट ने स्कोप को डिफाइन करते हुए 3-4 पॉइंट्स बताए. द फर्स्ट वन वाज दैट देयर शुड बी मिनिमम ऑफ 3 पार्टीज. सर्कुलर नंबर इज 159 of 2021 dated 20th September 2021. There should be minimum of 3 parties. मतलब एक वो जो सप्लाई फैसिलिटेट कर रहा है, एक वो जो सप्लाई कर रहा है और एक वो जो सप्लाई रिसीव कर रहा है. So there should be minimum of 3 parties. First. Second, there should be 2 distinct supplies. First is the main supply and the second is the ancillary supply. Main supply is between 2 persons who wants to buy and another who wants to purchase. Who wants to sell, sorry, who wants to buy and who wants to sell. Second is the ancillary supply, which is the facilitating or arranging the main supply. ये जो वर्ड है ना, अरेंजिंग और फैसिलिटेट, ये तो ना ही एजुकेशन गाइड में डिफाइन किया क्या है और ना ही इस सर्कुलर में डिफाइन किया कि एग्जैक्टली अरेंजेस और फैसिलिटेट का क्या मीनिंग है. दे डिफाइन द स्कोप ऑफ इंटरमीडिएट सर्विसेज, बट अगेन इन दोनों टर्म्स को आज तक ब्रेक छोड़ा हुआ है. तो एंसिलरी सप्लाई में भी उन्होंने यही बोला कि इट इज अ सर्विस ऑफ फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग द मेन सप्लाई बिटवीन 2 प्रिंसिपल्स. तो इससे हमें यह समझ में आता है कि इट शुड नॉट बी अ सप्लाई ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस. अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस सप्लाई है तो इंटरमीडिएट सर्विसेज नहीं माना जाएगा. A person involved in a supply of main supply on principal to principal basis to another person cannot be considered as an intermediary service. अब एक और चीज, इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर should have the character of an agent or a broker. He should identify himself as an agent of one other person. Merely if I am providing those services on principal to principal basis, I am not saying that I am your agent. Agent is someone who has more authority. Agent is someone who every time represents his principal only. So he should be identified as an agent or a broker. Fourth condition क्या थी? Does not include a person who supplies such goods or services or securities on his own account. तो अगेन सेम सर्विस टैक्स के एजुकेशन गाइड से, यूज ऑफ वर्ड सच इन द डेफिनेशन मींस जो मेन सप्लाई है वो मैं अपने ओन अकाउंट, या मैं खुद नहीं कह रहा कि आई एम द ओनर एंड आई एम प्रोवाइडिंग दो सर्विसेज टू यू, आई एम प्रोवाइडिंग दीज गुड्स टू यू. Two supplies are easily identifiable, main supply and ancillary supply. And fifth point जो सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग कैन नेवर बी सेड टू बी अ इंटरमीडिएट सर्विस. अगर ए ने बी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, या हमारे एग्जांपल में बी ने सी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो इट विल नॉट बी क्वालिफाइड एज एन इंटरमीडिएट सर्विस. इट विल ऑलवेज बी ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस. तो ये हमारा सर्कुलर्स या नोट एजुकेशन गाइड या क्लैरिफिकेशंस जो गवर्नमेंट ने इशू करे इन प्रोविजन से रिलेटेड या इंटरमीडिएट सर्विसेज के स्कोप को डिफाइन करते हुए. अब इशू आया सबसे पहले मटेरियल रिसाइकलिंग के केस में गुजरात हाई कोर्ट के सामने कि वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13(8) क्लॉज बी, वेदर इट इज अल्ट्रा वायरस to the whole of the IGST Act, the whole of the Constitution of India, or whether it is intra-virus. Material recycling में क्या बोला कि first of all IGST Act section 13 subsection 8 clause B एक artificial deeming fiction बना रहा है और एक जो supply export of service है उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोल रहा है, which is against the very nature or against section 1 or section 2 of the IGST Act or section 5 of the IGST Act charging section. तो सेक्शन 5 के अगेंस्ट जा रहा है बिकॉज सेक्शन 5 में केवल इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस को टैक्स करने के
टैक्स करने का पावर है, बट आप सेक्शन 13(8) में किसी सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई बना रहे हो एंड देन यू आर अप्लाइंग टैक्स ऑन इट और लिविंग टैक्स ऑन इट। सेकंड, इसमें बोला कि इट इज अ डबल टैक्सेशन, क्योंकि जो मेन सप्लायर ने अपने कस्टमर को सर्विस दी होगी उसमें इंटरमीडियरी की सर्विस की कॉस्ट को इंक्लूड कर लिया होगा। थर्ड बोला कि इट इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, कि आप अदर सर्विसेज को तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मान रहे हैं, कोई फॉरेन सप्लायर अपने ब्रांच ऑफिस यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लेगा, उसकी सर्विस भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होंगी। बट एक आप सेक्शन 40 आर्टिकल 14 का वायलेशन है, जहां पे आप इंटरमीडियरी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं। मटेरियल रिसाइकलिंग में गुजरात हाई कोर्ट ने सारे आर्ग्यूमेंट्स को निगेट करते हुए बोला कि गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक प्रोविजंस इन रिलेशन टू एन इंटरस्टेट सप्लाई। They have the power to make provisions in respect of the place of supply, and by very virtue of those powers they exercised in section 13 subsection 8 clause B, and it is not at all ultra virus of the Constitution of India. The artificial supply that has been created, deeming fiction that has been created, the legislature in his own wisdom has the power to do it. उसके बाद सेम इशू अराइज हुआ धर्मेंद्र जानी के केस में। इलस्ट्रेशंस वी विल कम टू एन एंड टू हैव द कंक्लूजन। उसके बाद सेम इशू आया धर्मेंद्र एम जानी के केस में, जहां पे अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 13(8) वाज चैलेंज्ड। बॉम्बे हाई कोर्ट, सबसे पहले तो डिसेंटिंग व्यूज आए। एक जज ने बोला कि इट इज अल्ट्रा वायरस, दूसरे जज ने बोला इट इज नॉट अल्ट्रा वायरस, इट इज विद इन द बेसिक फ्रेमवर्क्स ऑफ लॉ विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द जीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट। केस गया चीफ जस्टिस के पास। चीफ जस्टिस ने थर्ड जज को रेफर किया कि यू प्रोवाइड योर ओपिनियन ऑन इट, एंड देन द थर्ड जज again held that these provisions of IGST Act, legislature has its own wisdom to levy tax on it by virtue of section 2 clause 82 or 86 of the IGST Act, which defines place of supply. It specifically mentions that chapter 5 IGST Act में जो defined है, that will be all those supplies will be place of supply will be determined as per those provisions only. Therefore CGST Act में IGST Act का reference है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर्टिकुलरली एक्सक्लूड किया गया है CGST एक्ट में डिफाइन करने से। इंटरमीडिएट सर्विस भी CGST एक्ट में पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं है, सो देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड दैट। Department, or sorry, the government or the legislature does not want to tax the export of services, but they have every right to say that what will be qualified as an export of service and what should not qualify as an export of service. Intermediary services, in its own wisdom, government has said that the place of supply is in India, therefore they are not ultra virus to any of the provisions of the Constitution or the IGST Act. एक बेसिक आर्गुमेंट जो यहाँ पे लिया गया था एंड विच आई थिंक शुड बी कंसिडर्ड और विल बी कंसिडर्ड, आई डोंट नो, इन सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियसली ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि स्टार्टिंग से जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की तरह एडवर्टाइज किया गया है। कंज्यूमिंग स्टेट विल गेट द टैक्स, एक्सपोर्ट के केस में ओनली द सर्विसेज और द गुड्स विल बी एक्सपोर्टेड, टैक्सेस विल नॉट बी एक्सपोर्टेड। जब मेरी सर्विसेज एज एन इंटरमीडियरी भी मैंने अगर कोई सर्विस दी है, वो अगर ए ने
consume kari hai, who is situated outside India, then again the consumption of those services is outside India. Destination based tax says that the place of supply should be outside India. Let section 13 say something else. सेक्शन 13 है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग कि सेक्शन 13 कुछ भी कहता रहा है, हम डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल पे जाएंगे, बिकॉज डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल या तो कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली या जीएसटी एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि डेस्टिनेशन कंजम्पशन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को बेस स्टेट को टैक्स जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट जीएसटी एक्ट में केवल उसको बाइफरकेट, आईजीएसटी को कैसे बांटेंगे, सीजीएसटी को कैसे बांटेंगे, एसजीएसटी को कैसे बांटेंगे, उसके प्रोविजंस है. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कंज्यूमिंग स्टेट को टैक्स जाएगा, बट again the argument that should be considered is कि these services, obviously I have not consumed those services. Whosoever has been benefit with this with these services is the one who is situated outside India. तो इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ही ट्रीट करना चाहिए. लेट्स सी क्या होता है. उसके बाद ये धर्मेंद्र एम जानी का ही केस है. उसके बाद हम आते हैं अब जो बेसिक केसेस अभी तक आए हैं, जुरिस्प्रूडेंस कैसे इवॉल्व हुआ है सर्विस टैक्स रिजीम से, जीएसटी में क्या क्या केसेस आए हैं. नेहा, इज पेस परफेक्ट और एनी क्वेरीज शुड बी टेकन? The pace is okay. Q&A box में अभी तो कोई query नहीं है. I can ask the participants if you want to take Q&A while going ahead. हाँ, I'll take it in the end then. अच्छा ठीक. I'll ask the participants. Participants, you can write your Q&A in the Q&A box so that Ayush can take them before ending his session. Please continue. ओके. तो पहला जो केस था वो है GoDaddy का. GoDaddy इंडिया वेब सर्विसेज. इट इज एन AAR अंडर द सर्विस टैक्स रिजीम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो इस केस में क्या था, GoDaddy यूएस में एंटिटी थी. दे वांटेड टू सेट अप बिजनेस इन इंडिया एज वेल. GoDaddy हम सब जानते हैं, दे आर मेनली इनटू सेल एंड परचेज ऑफ डोमेन्स. अब इंडिया में डोमेन सेल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू हैव सम ट्रस्ट अमंग द इंडियन कस्टमर्स. आप कभी भी किसी से कोई चीज खरीदते हैं, आप पहले ब्रांड नेम देखते हैं, ब्रांड नेम के बेसिस पे ट्रस्ट एस्टैब्लिश करते हैं, एंड देन ओनली यू डू दैट शॉपिंग और परचेज समथिंग दैट फ्रॉम पर्सन. एंटिटी और her brand name only famous in USA cannot do business in India until Indian customers trust that brand. GoDaddy ने एक इंडियन एंटिटी बनाई और इंडियन एंटिटी को काम दिया एक मार्केटिंग का, एक क्वालिटी सुपरविजन का और एक पेमेंट प्रोसेसिंग का. मार्केटिंग में क्या क्या था, डायरेक्ट मार्केटिंग, ब्रांडिंग एक्टिविटीज एंड ऑफलाइन मार्केटिंग. अगेन ये डिफरेंट मोड्स ऑफ मार्केटिंग है. ऑफलाइन मार्केटिंग में वो जाते थे सेमिनार्स में, अपना स्पॉन्सरशिप देते थे, जो भी स्पॉन्सरशिप देते थे वो रिकवर कर लेते थे कॉस्ट प्लस 13% मार्कअप पे. ब्रांडिंग एक्टिविटीज में वो एडवर्टीजमेंट्स चलाते थे, अगेन डायरेक्ट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एक्टिविटीज में. सुपरविजन ऑफ थर्ड पार्टी सप्लायर्स में क्या था, एक कॉल सेंटर की जो सर्विसेज थी वो यूएस एंटिटी ने किसी को आउटसोर्स कर दी थी इंडिया में, बट इंडियन एंटिटी का ये काम था कि दे शुड हैव प्रॉपर चेक ऑन दैट कॉल सेंटर एंटिटी कि वो सारी क्वेरीज प्रॉपरली कस्टमर की रिजॉल्व कर रही है, कि सारी क्वेरीज पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द व्हाट द कस्टमर इज आस्किंग, एंड देन दे आर एबल टू प्रोवाइड द करेक्ट and the easiest solution to those services. So that was the quality check that Indian entity has to do for the US entity. Third was the payment processing services, कि जिसको डायरेक्ट यूएस डॉलर में पेमेंट करना है वो पे कर सकता है, बट दोस इंडियन कस्टमर्स हु वांट टू पे इन INR, तो दे विल, इंडियन एंटिटी will first take that amount in his bank account, in their bank account in INR, and then will reimburse that amount to the USA entity. So these were the 3 or 4 services that were being outsourced by the US entity to the Indian entity. The AAR, analyzing the provision of intermediary services, they categorically held that it is a supply between 2 persons only, between US entity and Indian entity.
there is no third person involved. Whatever the Indian entity has supplied to the US entity is on a principal to principal basis. Whatever has been agreed between them is on a principal to principal basis. Indian entity is not acting as an agent of the US entity. Yes, they are developing their market, but they are not anyhow concerned whether those marketing activity will ultimately result in sales to the US entity or not. They are not pitching to every customer. They are not going door to door, persuading the customer first, then negotiating the price second, and then supplying, helping US entity to supply those services to that Indian customer. So whatever the Indian entity has done for the US entity is only the support services in relation to marketing, in relation to oversight of the quality check, or in relation to payment processing. And everything was on principal to principal basis. These services of Indian entity has only helped US entity to augment its sales in India. There was no arrangement of facilitation by the Indian entity in generating those sales, or maybe in finalizing a one-to-one transaction, because there is no third party involved in it. तो ये तो बहुत सिंपल केस था, समझ में आया होगा सबको. इस तरीके की केसेस तो ऑब्वियसली आर इजियर टू अंडरस्टैंड. आगे आएंगे और जजमेंट्स जिसमें हम देखेंगे कि जहां पे इंडियन एंटिटी ने इवन कस्टमर सॉलिसिट करके उनसे प्राइस नेगोशिएट करके they helped in facilitating or arranging, then also the court held that it is not an intermediary service. Second important case of service tax regime is Verizon Communications India Private Limited. Again, the following services were provided: business services, business support services, sales support services, marketing, advertisement, billing, and whatever the charge was cost plus 11%. In this case also, court held that these services are being provided on principal to principal basis. Whether or not the sales fructifies, whether or not the contracts fructifies of the US entity with the customers in India, the Indian entity will charge its cost plus 11%, and therefore the two supplies are totally different, and all the supplies are on principal to principal basis. Another important case is Lubrizol Advanced Materials India Private Limited versus Commissioner of Central Excise, Belapur. Now, try to understand कि इसमें how Lubrizol was involved with the foreign entity. It was engaged in the business of rendering administrative and sales related services to the group entities located outside India. Administrative and sales related. Matlab, the appellant had entered into various agreements with overseas group entities for promotion of products and solicitation of orders for them from prospective customers located in India. Again, they will charge cost plus markup. The basic distinction over here is, yes, they will solicit, they will promote their brand, but जो भी खर्चा हुआ उसका कुछ मार्कअप ऐड करके मैं कमीशन चार्ज कर लूंगा अपना. I am least bothered whether the sale has happened or not, whether the final supply between A and C, or the US entity and the Indian customer, has happened or not. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कमीशन चार्ज करने का तरीका will determine that whether it is an intermediary service or not? If it is depend upon the final result, then it is an intermediary service, or if it is not dependent upon the final result, then it is not an intermediary service. Lubrizol में कोर्ट ने, मुंबई ट्राइब्यूनल ने क्लियरली बोला कि the sales is not directly correlated with the services provided by the Indian entity. Why? Because the Indian entity may provide service today and the sale may happen a year later. Or maybe a sale may happen as very next day, but the consideration that Lubrizol is
charging from the foreign company is not at all dependent upon the final results of its efforts. Another judgment of Ernst & Young India Private Limited, Ernst & Young Limited versus Additional Commissioner of CGST Delhi High Court. Professional services were being provided by Indian entity to the UK entity and other entities as well. Again, this was a clear and cut case that these are all on the principal to principal basis. These services are provided on his own account. There was never a doubt that these services are being provided by on behalf of some another person. Indian entity provided those services on its own account, and therefore Delhi High Court held that these cannot be called as an intermediary services. Another case is of Cube Highways and Transportation Assets Advisor Private Limited. In this case, the Indian entity was engaged in the provision of management consultancy services in the nature of investment advisory, marketing survey and advisory services to entities located outside India. क्या काम था कंपनी का? वो मार्केट एनालिसिस करती थी, बाहर की कंपनियों को अपडेट देती थी कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इंडिया में, क्या इंफॉर्मेशन है इंडिया में, क्या लीगल या फिर बिजनेस रेगुलेशंस चल रहे हैं इंडिया में, और उसके बेसिस पे बाहर की एंटिटीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती थी. वो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करती थी इंडियन एंटिटी कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये रिस्क है, यहाँ पे ये रिवॉर्ड है, और ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंडियन एंटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पोटेंशियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और वट एवर दैट रिपोर्ट वाज, उसके बेसिस पे फॉरेन एंटिटीज यूज्ड टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया. So can I say that what I have done is in the nature of an agent, wherein I have facilitated a supply of an investment by an outside entity in India? Again, the concept lies that whether or not the US entity will make the investment or the foreign entities will make the investment, the decision making power was with them only. Even if they like the report of the Indian entity, Indian counterpart, then also it was in their hand to make the investment or not, or to decide the amount of investment and many other things. This is the extract of the judgment that I have reproduced over here, and इसको मैं पढ़ना चाहूंगा because बहुत अच्छे से इसमें थोड़ा इंटरमीडिएट को डिफाइन किया है. It is apparent from clause 2 stated herein above that petitioner at all time was required to act as an independent service provider. Clause 2 of the agreement. तो ये clause 2 एक agreement का है जो वहां पे judgment में reproduce किया था. And the agreement with I squared was on principal to principal basis. It was expressly specified in the said clause that the petitioner is not intended to be an agent or partner of I squared. Similarly, the last paragraph of clause 3 of the agreement clearly states that the petitioner could at no point in time can represent or reflect to anyone that it has the authority to negotiate and conclude the terms on behalf of I squared or its affiliates. मैं एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, तब भी मैं उनके पास जाके ये नहीं कह सकता था कि मैं आई स्क्वायर जो फॉरेन एंटिटी है उसका रिप्रेजेंटेटिव हूं एंड आई नेगोशिएट द इन्वेस्टमेंट टर्म्स विद यू. I didn't ever had that opportunity. What was my role was that yes, this is a startup, say it is looking for investment. I found this startup to be good. You can invest your money in this startup. I was not allowed to go to the startup and negotiate that I will invest this much amount at this much equity or this much amount at this much interest. तो मैं जिस तरीके से काम कर रहा था और क्यूब हाईवेज जिस तरीके से काम कर रहा था इंडिया में, दैट वाज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस ओनली. That's why in this case also the court held that these services will not be qualified as an intermediary service. एक अभी एक रीसेंट जजमेंट था मेडवे एजुकेशनल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का. इसमें
जो कंसल्टेंट का रोल था वो और भी ज्यादा था. So what was the consultant doing in this? That consultant in India had ties with foreign universities जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी जगह पे लोकेटेड थी. एपेलेंट का काम था इस केस में कि उन फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में एडवर्टाइज करना, उनके करिकुलम को इंडिया में एडवर्टाइज करना, स्टूडेंट्स को कन्विंस करना कि व्हाई यू शुड टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, उनका पूरा फी स्ट्रक्चर बताना, उनका स्केड्यूल बताना, उनका कंट्री में अराइवल का सब कुछ फैसिलिटेट करके देना, सब कुछ अरेंज करके देना उन स्टूडेंट्स को. The appellant assisted the students to get admission in these foreign universities and also advised them regarding the payment of tuition fees and associated fees required for study, and also provided information as to the options available for their accommodation in these countries. In this case also, SysChat Tribunal New Delhi again held that these transactions are two different transactions not linked to one another. What that consultant is doing is on his own behalf doing work for a foreign entity, providing an independent service to foreign entity. It has never while marketing those foreign universities has said that I am also one of those universities. It may or may have negotiated the price, but final decision was again of the foreign university, and therefore the services provided by this consultant, Medway Educational Consultant Private Limited, was on a principal to principal basis, and hence this will not again be qualified as an intermediary service. एक जो इंपॉर्टेंट और लास्ट केस में डिस्कस करना चाहूंगा, उसके बाद वी कैन टेक क्वेश्चंस, is of SNQS International Stocks Private Limited. इस केस में जो उसका कमीशन था वो 2.5% ऑफ द FOB वैल्यू था. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू नोट. सेकेंड पॉइंट टू नोट वाज, जो ये काम कर रहा था इंडिया में, वो इसको गवर्नमेंट्स प्रिक्योर करने थे इंडिया से एंड एक्सपोर्ट करने थे. तो एक्सपोर्ट ये नहीं कर रहा था. द एंटिटी इन इंडिया वाज जस्ट required to identify the vendors who could export those garments. तो वो गवर्नमेंट्स उनका डिजाइन एंड डेवलपमेंट फाइनल करता था, वेंडर्स का इवैल्यूएशन करता था, क्वालिटी एश्योरेंस करता था, और फिर लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट देता था वेंडर को. इतना सब कुछ करने के बाद भी अगेन SysChat Chennai and Supreme Court subsequently affirmed that these are not intermediary services, and only the nature of remuneration will not determine the nature of service. Even if it is 2.5% of the FOB value, does not mean that whatever the Indian entity has done has acted as an intermediary, because whatever the service has been provided is again is in the nature of an independent entity, wherein Indian entity has never represented itself as the part and parcel of the foreign entity. Whatever the agreement has been entered between the Indian entity and the foreign entity is on a principal to principal basis, and whatever the supply has been made by the vendor in India to a entity situated outside India is a separate transaction having no relevance with the appellant in this case. So in this case again it was held that the services provided by SNQS International Stocks Private Limited is not the intermediary services, and they were qualified as an export of service. तो कोर्ट ने इस हद तक जाके बोला है कि इंटरमीडियरी सर्विसेज नहीं होंगी. Although as per the facts that I understand from the reading of the judgment, they were more or less in the nature of arrangement of facilitation of the supply of goods or services. But again, what has to be looked into is the facts of each case. अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटेट का मीनिंग अब जो इन जजमेंट से निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि इट इज वेरी नैरो. आप हाथ पकड़ के सब कुछ करवाएंगे, देन ओनली इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटेशन. merely identifying, merely connecting two parties is not arrangement of facilitation. Even negotiation is not arrangement of facilitation.
शुरू से लेके एंड तक का सपोर्ट अगर आपने दिया है, then only you are providing those services as an intermediary services, and then your contract again should say that you are an agent, you are not an independent service provider. अब बस 5 मिनट और है ना मेरे पास। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं एक बार फिर से Request the participants to write any Q&A in the Q&A box. अगर कोई specific query है, you can also raise your hand अगर लंबी query है and you do not want to write it in the Q&A box. हाँ आयुष, कंटिन्यू करो आप। हाँ, तो इलस्ट्रेशंस जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी कि इन द फर्स्ट केस वेयर ए इज हेल्पिंग or where C is helping A in supplying that machinery in India, he is doing everything on behalf of C and everything on behalf of B. B के पास गया, नेगोशिएट किया, इंस्टॉलेशन कराया, ऑर्डर लिया, ऑर्डर C को दिया, C ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, A को मशीनरी डिलीवर करी, B गया, उसका इंस्टॉलेशन किया। दिस इज व्हाट आई से कि हाथ पकड़ के सर्विस देना is an intermediary service, which the circular has said that it will be qualified as an intermediary service. सेकेंड, हमने सॉफ्टवेयर वाला एग्जांपल डिस्कस किया था, that is just an outsourcing, that is just a subcontract which B has given to C. So obviously whatever A, B or C, whatever C has done will not be qualified as an intermediary service, because these were just the outsourcing services that were being performed by C. थर्ड इलस्ट्रेशन जो हमने डिस्कस किया था वो इन रिलेशन टू एन इंश्योरेंस प्रीमियम था। इसमें कहीं ना कहीं सर्कुलर ने ये बोला है कि इट इज मेयरली अरेंजिंग और फैसिलिटेटिंग एंड देयरफॉर क्यू इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन these type of insurance services should not be qualified as an these type, or say insurance or any other services should not be qualified as an intermediary services. We can easily fight it out, considering that all the jurisprudence till now are in the favor of the assessee. And the fourth one which we discussed is about business process outsourcing. Again, outsourcing or subcontracting is not at all intermediary services. It is again an independent function performed by an independent entity. So yeah, this is all from my side. I hope I have done justice to this topic. If there are any queries, I am happy to take the same. हाँ, Vipul ji is asking, so the judgments that you have illustrated are mostly from service tax regime. Are these judgments valid in GST regime as well? If no, then are there any judgments in the GST regime? विपुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इंटरमीडिएट सर्विसेज की डेफिनेशन जो जीएसटी एक्ट में है और जो पहले सर्विस टैक्स एक्ट में थी, दे आर एग्जैक्टली सेम, बस थोड़ा सा स्कोप बढ़ा दिया है सिक्योरिटीज को इंक्लूड करके जीएसटी एक्ट में। तो whatever the judgments or whatever the jurisprudence is there in the service tax regime will squarely apply in the GST regime first, and second, there are many judgments in the GST regime as well, which is again akin to this and have a favorable outcome or a judgment in the for us. So yes, so for both of your questions, the answer is yes. Participants, do you have any technical questions for Ayush with respect to intermediary services? I have one question. Please go ahead, Rishabh. Ayush, if you can reiterate a little bit on the principal to principal case law that you were taking, where there were marketing and other back office support services. Because I am looking at, you might know I do transfer pricing, and I could see a clear-cut case of how transfer pricing was being followed by charging 11% markup on their cost. So if you could just take that case law once again, because to know about the GST implication on the same is very crucial for the clients also to have an holistic understanding of the overall transaction. Correct. So there were two cases that I discussed in this. One is of Verizon. Although all the three cases, in all the three cases, there was cost plus markup that was being charged. So what Rishabh has asked is regarding what is principal to principal basically.
So principle to principle that we have to understand is in the nature, I am an independent entity. The party that I am supplying services to or the goods to is an independent entity. We both have entered into an agreement and where we have decided our scope of work, that what the Indian entity will do for the foreign entity. The remuneration may be on the cost plus markup, the remuneration may be on the 10% of the sale value. The essence of principle to principle is we both are independent, we both are not associated with each other. I may be performing the same services for someone else also. Again, what I am doing in India is not at all representing myself as an agent of foreign entity or an office of a foreign entity. Whatever I am representing myself, whatever I am doing is on account of the scope of work that has been laid down in that agreement. So I have Ayush another reiteration to this question. Is this true for captive service providers also, wherein we are providing 100% service to another entity on such basis? What are the services again? Can you repeat? No, the same services. It's that you mentioned that these are independent parties, and maybe you are providing it to other enterprises also the same service. Correct. But what if it is a captive service provider? 100% services are being provided only to one customer. Even in that case, we'll consider it as the same. Again, the GoDaddy example is the or maybe the Ernst & Young example, wherein Ernst & Young were providing the services to all the Ernst & Young entities only. The same thing will apply where if the services 100% services are provided only to one entities or other entities, the same logic will apply. Great. Thank you. Thank you. Do we have any other questions? Please put it into the Q&A box or raise your hands. I think we should proceed, Ayush, and in case there are any questions specifically mentioned for you, we can take that up maybe during or at the end of the next session. Is that okay with you? Yeah, sure. All right. I'd quickly like to thank you, Ayush, for joining us today and for deliberating to our participants. Most of the people who are not able to join us because it's a Monday evening, they can always find this webinar recording on our YouTube channel called Voice of CA. And most of the times that's the case, yes. So moving on to the next session. Thanks, Ayush. Moving on to the next session, we have with us Advocate Akshay Grover and CA Advocate Shivashish, who would be taking up export industry. I'd quickly like to introduce Akshay. Just one second. Okay, so Akshay has over 8 years of experience in the field. He's a law and commerce graduate from Agra University. He specializes in GST audits, litigation, compliance review, legal opinions, tax planning and advisory in GST, excise and customs, with a rich industry experience. Happy to have you on Voice of CA, Akshay. Over to you. Thank you, Neha. Thank you for such a wonderful intro. Let's start with the session because it's, I think, 5 minutes up from the time. Let's share. I'm sharing the screen for the participants. Yes. Could you please see if you can share the screen? Yes, I can see it. Yeah, thank you. Just move the slideshow. Yes. It is like this one. F5. Am I audible? हाँ, Yes, this is perfectly visible, clear. पर अभी slide show में नहीं गया है, अक्षय. Slide show में नहीं किया है. नहीं, not yet. Slide show वाले से एक बारी करके देखिए, please.
Just a I will take this opportunity to tell a little bit about Voice of CA to our participants. Voice of CA is an NGO which was introduced in 2009 by my father, CA Sanjay Kumar Agarwal, who's also a Central Council member. And since Voice of CA has been doing webinars, seminars, health checkup camps, and so many other types of programs for our CA fraternity and our members to add value into their lives and to add value to their professional gesture. Akshay, please see if you could, if you are able to go into the slideshow. We have also launched our CA job vacancy Facebook group. You can always search by the name of Voice of CA on Facebook, Voice of CA vacancy group on Facebook, and you can check out latest vacancies. There are at least 30 vacancies from mediocre as well as top firms in the for chartered accountants and other finance staff and articles, of course. And our members can always go on the group, put up a vacancy for their firm. It's a free group. I think the slide is not moving. Yes, that's correct. It's not moving. It's moving like this. If you'd like to start like this only, it's okay. Actually, we Yeah, can see I it. think it is. I think it is completely visible, so it's okay. It's visible. It's visible. You can take it up. Let's start. Let's start with the export sector. We are here today to give you an overview for the issues under the export sector under GST. There are much practical challenges and solutions which we were looking into in this export sector. Let's first start with the meaning for export of goods and export of services. As professionals and participants, we all know, हम सबको पता है export of goods, export of services. पहले उसकी definition की तरफ चलते हैं. Export of goods, majorly, what we can say is taking goods out of India to a place outside India. And export of services is defined under section 2(6) of IJ, as the Ayush also covered that part of definition of export of services. And we would again like to tell, हम फिर से इसको एक बार स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले हमें एक्सपोर्ट का मीनिंग पता हो, एक्सपोर्ट के बारे में पता हो, तभी हम उसके आगे उसके प्रोविजंस को एक बार कंटिन्यू कर पाएंगे. First is export of goods. Under GST, export of goods means taking goods out of India. Means India की custom frontiers से अगर हम जो उसके territorial region से goods को बाहर ले जाते हैं, उसे export of goods को define किया जाता है. और export of services को specifically define किया गया है section 2(6) of IGST Act में, जिसमें उसकी 5 conditions को बताया गया है. और इसके लिए specifically कहा गया कि इन 5 conditions को fulfill करके, if you can fulfill these 5 conditions, then only the services, export of services will be constituted. For which first condition would be supplier of service, means the service provider should be from India. Second, the recipient of service should be outside India. Third, place of supply, as described by Ayush also, the place of supply should be outside India. Fourth, payment received by the supplier, जो हम as a supplier हम goods दे रहे हैं, उसकी जो payment receive हो, that should be in the convertible foreign exchange. And fifth, both the parties, means supplier and the recipient, should not be a merely establishment of a distinct person. Means दोनों अपने अपने laws में registered है. Means जो supplier है वो Indian laws में registered होना चाहिए, और जो recipient है वो उस particular country के records laws में registered होना चाहिए. वो सेम लॉज में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, और वहां पे ये नहीं कि किसी लॉज में रजिस्टर्ड नहीं है और वो सेम एंटिटी के पार्ट है.
तो उसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे कंस्टिट्यूट नहीं करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अंडर जीएसटी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बोथ को जीरो रेटेड सप्लाई के अंडर डिफाइन किया गया है। मींस export of goods, export of services are never termed as export under GST. It is termed as zero rated supplies. And this definition is defined in section 16 of the IGST Act, where it specifically says zero rated supply means export of goods or services or both. And second, if the goods are being supplied to a special economic zone developer or special economic zone unit. मीन्स अगर इन दोनों को भी इंडियन एंटिटी के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर, इफ देयर इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड दैट goods are being supplied to such economic zone, special economic zone, then only the goods will be said told to be a zero rated supply. And under GST, these type of exports, and both the exports means either export of goods out of India or export of goods to a special economic zone is termed as zero rated supply. And there are 2 points, 2 methods of such exports. First is exports under LUT and second is export with payment of tax. That is, हम 2 तरीके से एक्सपोर्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहला अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वेयर the tax is not to be paid at the time of you can say in the tax period at the time of filing of GST 1 and 3B. And second is with payment of tax. That means we have to pay the taxes as just like as we do it for domestic supply. मतलब जब भी हम GST 1 3B फाइल करेंगे उसमें हम टैक्स पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक कंडीशन ये है कि इन केसेस में हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को मतलब हम कह सकते हैं कि विद पेमेंट ऑफ सप्लाई में जाके और विदाउट पेमेंट सप्लाई में जाके हम उसको जीरो रेट सप्लाई नहीं कह सकते अगर हम लोग उस पर्टिकुलर गुड्स पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल है। मींस जैसे ही कल हमारा एक रिकमेंडेशन आया है 53rd जीएसटी काउंसिल में, जिसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि रिफंड अंडर बोथ द केसेस विल बी नॉट बी अलाउड इन केसेस where goods are subject to export duty even when goods supplied to SEZ. मींस कि अगर हमारी गुड्स जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे जिसपे एक्सपोर्ट ड्यूटी एक लेवाई की गई है, पहले तो हम एक्सपोर्ट की कंडीशंस पे आते हैं। गवर्नमेंट का शुरू से एक इंटेंशन ये है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंशन ये है कि हमें गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, ना कि टैक्सेस को एक्सपोर्ट करना है। गुड्स शुड बी एक्सपोर्टेड, नाइदर टैक्सेस शुड बी एक्सपोर्टेड। Goods should be exported, neither taxes should be exported. अब उसमें ये था कि गवर्नमेंट का सीधा फंडा ये रहता है कि हमारा फॉरेन रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज हमारा इंक्रीज होना चाहिए और हमारे उस पर्टिकुलर केस में हम लोगों को कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स करें। अब जब हम उस कैटेगरी में आते हैं, गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस में कुछ केसेस में कहती है कि ये गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होने। अब फॉर दैट ऑन दैट केसेस दे से इन गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लेवी होगी। Therefore, रिफंड एक कंडीशन ये लाई गई कि पहले क्या था कि ये जो गुड्स थे ये एक्सपोर्ट ड्यूटी वाले जिसपे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो सिर्फ एक ही कैटेगरी में एक्सपोर्ट हो सकते हैं, दैट वाज अंडर विदाउट पेमेंट कैटेगरी। बट अब उसको एक फॉरवर्ड देके एक रिकमेंडेशन आई है कि दीज पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स व्हिच ऑन व्हिच एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेवेबल कैन इवन बी सप्लाइड अंडर can is not allowed under neither under the you can say with payment category nor under the without payment category. And for that they have also recommended that if in that case if the goods are being supplied to SEZ, that is special economic zone, then also these goods are not allowed to be done, these type of goods are not to be allowed to be exported to SEZ also. Coming to the fourth presentation, there are जैसे मैंने आपको पहले बताया कि there are two type of exports, export under LUT and second export under with payment of tax category. अब जो LUT फाइल होता है वो फाइल होता है हमारा RFD 11 के अंदर, जो कि प्रीवियस ईयर के 31 मार्च तक फाइल हो जाना चाहिए। मतलब कि हमारा LUT हमारा जिस अगर 24-25 का हमारा कोई एक्सपोर्ट है उसका LUT हमारा 31 मार्च 24 तक हमारा फाइल हो जाना चाहिए, जिससे कि हम आगे LUT के अंदर एक्सपोर्ट कर पाए, विदाउट पेमेंट कैटेगरी में एक्सपोर्ट कर पाए। और अगर हमारा कोई इसके लिए हम कुछ वॉल्यूशन होता है और हम अगर ऐसा नहीं कर पाते और हम नहीं कर LUT फाइल नहीं कर पाते हैं तो उस पे रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे टैक्सेस अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट।
बट इन दिस केस ऑल्सो एक जो हमारा रिफंड मास्टर सर्कुलर है, सर्कुलर 125, उसमें स्पेसिफिकली कहा गया कि अगर किसी केस में हमारा एलयूटी डिले फाइलिंग होती है, डिले फाइलिंग मींस ये नहीं कि फाइल ही नहीं हुआ बट डिले फाइल्ड है, कि जैसे हमारा हम भी एक्सपोर्टेड इन अप्रैल 2024 एंड दैट फाइल एंड द एलयूटी वाज फाइल्ड आफ्टर 3 years 4 years 3 months 4 months या 5 tax periods, then also that export will be constituted to be an export LUT and no refund can be rejected on that part. देखो मैंने देखा प्रैक्टिकली कई सारे कंडीशंस में ऐसा आ रहा है, कई सारी जगह पे ऐसा आ रहा है कि जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज हैं वो एलयूटी के बेस पे आपके रिफंड्स को रिजेक्ट कर रही है, बट उसकी क्लेरिफिकेशन पहले से ही 2019 सर्कुलर में दी गई है कि इफ देयर इज अ डिले फाइलिंग देन ऑन दैट बेसिस एलयूटी इज फाइल्ड बट डिले फाइल्ड ऑन दैट बेसिस रिफंड कैन नॉट बी रिजेक्टेड. अब हमें टाइम लिमिट पे आते हैं कि एक्सपोर्ट हमारा कितने पीरियड में हो जाना चाहिए. गुड्स के केस में अगर जाएं तो द डेट ऑन विच इनवॉइस इज बीइंग इशूड within 3 months of issuance of that invoice, the goods must be exported. And if in that case the condition is not fulfilled within 15 days of expiry of that 3 months, the time limit is for payment of tax. Government को हमें taxes का payment कर देना है along with applicable interest. And second is in case of services in which जब सर्विस का इनवॉइस इशू हो जाता है, अगर उसके 1 साल के अंदर हमारी कोई पेमेंट रिसीव नहीं होती है, then also we have to pay the taxes to the government within 15 days expiry of that 1 year. हमारा रिफंड एप्लीकेशन जो फाइल होता है वो RFD 0 में आगे हम डिस्कस करेंगे और एलयूटी के अंदर, एंड जो हमें एलयूटी के अंदर है हमें जो आईटीसी है उस पे जो रिफंड मिलता है वो कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल. Second is export under with payment of category as we were discussing before. In this case, the shipping bill filed by the taxpayer automatically forms to be an refund application, and it is to be filed. Since it is an automatic application, it is deemed to be filed as soon as the EGM is filed by the exporter. That means the exporter who files the EGM with the custom authorities and files his GST 1 and 3B under the GST authorities with the GST portal. These both the conditions deemed to be that refund application is being filed, and shipping bill acts as a refund application for the under that category. Export with payment option जो है वो हमें इन 3 केसेस में अवेलेबल नहीं होता है. मींस जो हम विद पेमेंट ऑफ टैक्स वाली कैटेगरी है वो हमें इन 3 केसेस में एप्लीकेबल नहीं रहती. पहला इज डीम्ड एक्सपोर्ट्स, सेकंड इज मर्चेंट एक्सपोर्ट्स, that is when we procure goods under the 0.1% category and it acts as a directly export, just we receive the goods as a trader and export it to the other country. In this case also हमें with payment category allowed नहीं है. Third is exemption from payment of various custom duty in case of import of specified goods by specified subject to certain conditions. इन केसेस में भी ये कस्टम का एक नोटिफिकेशन है 78/2017 जिसको स्पेसिफाई किया कि अगर इस कैटेगरी में गुड्स आते हैं तब भी हमें विद पेमेंट ऑफ कैटेगरी में हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. लास्ट पॉइंट एक इस पर्टिकुलर विद पेमेंट कैटेगरी में ये है कि 1 अक्टूबर 2023 को एक ऑप्शन हम लोगों को कहा गया कि इन ऑप्शन दिया गया इन पर्टिकुलर कैटेगरीज वाले जो मतलब जो एक पर्टिकुलर टैक्स पे कैटेगरीज दी गई और पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज बताए गए, इन कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन पर्टिकुलर टैक्स पेयर्स को हम लोगों को जीएसटी में विद पेमेंट कैटेगरी विद पेमेंट वाला एक्सपोर्ट वो अलाउड नहीं है. मींस कुछ कैटेगरी ऑफ टैक्स एक नोटिफिकेशन दी गई, कुछ कैटेगरी ऑफ पर्संस को हम ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है. अब हम आते हैं आरबीआई के सर्कुलर पे जिसने हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए पेमेंट्स को एंड अदर कंडीशंस को डिफाइन किया है. स्पेसिफिकली हमारा जो कंडीशन देखा जाए कि एक्सपोर्ट्स का मेजर मोटिव है, एक्सपोर्ट्स को टैक्स पे करने का मेजर मोटिव होता है कि फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का हमारा रिजर्व बढ़ना चाहिए. अब किस केस में हम एक्सपोर्ट करें और हमारे पेमेंट्स नहीं आते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज करेंसी बढ़ा नहीं, और गवर्नमेंट का जो शुरू से इंटेंशन रहा है कि एक्सपोर्ट्स द गुड्स नॉट टैक्सेस, उस कंडीशन में आके हम लोगों को ये दिखता है कि हम लोग जब पेमेंट से नहीं आ रहे तो एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट्स का कोई फायदा नहीं. तो आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला. एक सर्कुलर में उन्होंने स्पेसिफाई किया कि अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट्स करते हैं और अगर 9 मंथ्स के अंदर हमारे एक्सपोर्ट्स के 9 मंथ्स के अंदर, दैट मींस डेट ऑफ एक्सपोर्ट, दैट इज लियो डेट यू कैन से, डेट ऑफ एक्सपोर्ट के 9 मंथ्स के अंदर अगर हमारा अमाउंट रिसीव नहीं होता है, कंसिडरेशन रिसीव नहीं होता है, तो हमें उसका जो अमाउंट है टैक्स का जो रिफंड का अमाउंट है वो हमें रिफंड बैक
टू द पे बैक विद इंटरेस्ट टू दी गवर्नमेंट करना होता है। हम रिफंड भी ले लें, हम टैक्स भी पे ना करें, हम रिफंड भी ले लें और हमारा पेमेंट फॉर एक्शन रिजर्व भी नहीं पड़ा, तो हमें रिफंड के लिए ये हमारा जो मतलब जीएसटी एक्ट में जो जीएसटी रूल्स है 96B इसको स्पेसिफिकली कहता है कि हम लोगों को रिफंड इज टू बी पेड बैक along with applicable interest at the rate of 18% in case the amount is not received within 9 months unless written off on the allowed of merits। एक कंडीशन ये भी है इसके अंदर कि हम लोगों को 9 मंथ्स की जो लिमिट है दैट कैन बी वेव्ड ऑफ बाय आरबीआई। इसके दो कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि एडी बैंक के पास जो लिमिट्स हैं, एक उसके पास जो पावर्स हैं, उसके अंडर वो जो ऑथराइज्ड बैंक होता है, ऑर्डर डिपॉजिट बैंक होता है आपका, उसमें जो कंडीशंस हैं कि अगर उनके पास पावर्स है कि वो वेव कर सकती है उस पेमेंट के लिए, उनके पास जिस पीरियड की पावर है उतना वो वेव ऑफ कर दें, या फिर जो हमारे स्टार रेटेड एक्सपोर्टर्स हैं या फिर स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास भी कुछ आरबीआई ने पावर्स दिए हैं कि वो लोग भी उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके अपने अमाउंट को वेव ऑफ करवा सकते हैं। अगर उन दोनों मेरिट्स पे जाके अगर हमारा अमाउंट वेव हो जाता है तो ठीक, नहीं तो हमारे 9 मंथ्स की जो एक बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है और जो 9 मंथ्स का जो बेसिक टाइमलाइन है, अगर उसमें हमारा पेमेंट नहीं आता है तो हमें रिफंड को पे बैक करना है विद इन 30 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट 9 मंथ्स। उस 9 मंथ से कंप्लीट 30 डेज के अंदर हमें पे बैक करना है। अब हमारे पास एक चीज और है, नॉट टू बी इन दिस केस हमारा जो अमाउंट हमारा एक्सपोर्ट इज नॉट टू बी डिपॉजिट इन केस आरबीआई वेव्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स। अगर आरबीआई किसी नोटिफिकेशन की वजह से, किसी रीजन की वजह से उस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट्स की रियलाइजेशन को वेव ऑफ भी कर देती है, तब भी हम उस केस में हम लोगों को रिफंड वापस करने की जरूरत नहीं है। और इन केस हमने रिफंड को पे बैक कर दिया है गवर्नमेंट को और सब्सिक्वेंटली हमें इन फ्यूचर वो पेमेंट वापस आ जाता है, तो उन दैट केस ऑल्सो हम इन 3 महीनों के अंदर अगर पेमेंट रिसीव होने के विद इन 3 मंथ्स हम गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दें तो हमें वो रिफंड वापस मिल जाए। अब कमिंग टू दी once again a new you can say a major issue in which the ITC, आप देख रहे होंगे कि डिपार्टमेंट कई इन केसेस में आईटीसी को हमारे बहुत इनएलिजिबल बताता है कि हमारे इन केसेस में कुछ सप्लायर्स हैं जिनका पेमेंट हमारा नहीं आता और कुछ सप्लायर्स ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है वो रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हो जाता है। उन केसेस में डिपार्टमेंट ने मल्टीपल ऑडिट्स के टाइम पर, मल्टीपल नोटिस के टाइम पर ये बताया कि जिन पर्टिकुलर सप्लायर्स के आईटीसी आपके रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हो जाते हैं उन केसेस में आपका आईटीसी इनएलिजिबल हो जाता है। अब उस इनएलिजिबल आईटीसी का हम लोग रिफंड ले लें, वो एज पर गवर्नमेंट इज अब मतलब इज अ वायलेशन ऑफ लॉ। बट एक केस लॉ था, एक केस लॉ है, इसमें वैसे मल्टीपल केस लॉज आए जिसमें मल्टीपल हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर आपका जो सप्लायर रजिस्ट्रेशन रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हो रहा है और आपने जो पर्टिकुलर परचेज करी उस टाइम पे उस पर्टिकुलर सप्लायर का जो रजिस्ट्रेशन था वो एक्टिव था एंड दैट परचेज वाज एलिजिबल, देन इन दैट केस द सब्सिक्वेंट अगर आपका सब्सिक्वेंटली रिट्रोस्पेक्ट कैंसिलेशन से आपका आईटीसी इनएलिजिबल नहीं होता। ये ही सेम केस हमारे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के केस में एक पार्टी R8 स्पेस डिजाइन्स में उन्होंने बोली, इन दिस केस आल्सो following on the same line it can be easily interpreted that ITC claim by genuine exporters cannot be challenged in case the exporter can prove the genuineness of the transaction made with the supplier whose registration can be retrospectively cancelled। मतलब उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि जेन्युइन एक्सपोर्टर्स के केस में अगर उस पर्टिकुलर आईटीसी को हम चैलेंज नहीं कर सकते, so it will be unjustified to reject the ITC refund pertaining to suppliers whose registration is retrospectively cancelled। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि सप्लायर जिसका रजिस्ट्रेशन रिट्रोस्पेक्टिव कैंसिल्ड हुआ और उसकी आईटीसी को हम ब्लॉक नहीं कर सकते, इट विल बी अनजस्टिफाइड टू दैट एक्सपोर्टर, क्योंकि जब आईटीसी ही एलिजिबल है तो हम रिफंड को रोक ही नहीं सकते। रिफंड तब रोका जा सकता है जब आईटीसी इनएलिजिबल। Now coming to the refund, under this refund category there are multiple you can say timelines. First timeline is for the application of refund application. In this case the refund relevant date for which the refund can be applied is 2 years। अब 2 years कहाँ से काउंट होने हैं? That is from the लियो डेट। लियो डेट मीन्स अगर हम सी या एयर से शिप कर रहे हैं तो जब एयरक्राफ्ट हमारा लीव करता है इंडिया से, लैंड से कर रहे हैं जब कस्टम फ्रंटियर क्रॉस कर जाते हैं, और पोस्ट से कर रहे हैं तो हमारा डिस्पैच ऑफ गुड पोस्ट ऑफिस हो जाता है। अब इन तीनों केसेस में कॉमन इज लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर डेट। इन तीनों केसेस में जब भी कुछ होता है तो एक लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इशू किया जाता है। उस पर्टिकुलर केस में
उस लियो डेट को बेस बना के उससे 2 इयर्स देखे जाएंगे और इन 2 इयर्स के अंदर हमें रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी जरूरी होती है। अब सर्विसेज के केस में देखा जाए तो सर्विसेज के केस में जो 2 इयर्स काउंट होंगे, दैट इज विदाउट, इन केस ऑफ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, मींस if goods are exported under without payment of tax category, the due date will be counted on furnishing of GST 3 for that tax period. And under with payment category, either issue of invoice or receipt of payment, whichever earliest to be taken as the base date from which the 2 years is to be counted for the relevant date. Now coming to the next issue in which application for refund. अब refund application आता है एक्सपोर्ट्स का मेजर है कि वी शुड एक्सपोर्ट गुड्स नॉट टैक्सेस, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर कंडीशन में कि अगर एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग तो हमें उस पर्टिकुलर टैक्स का जो भी उसमें इनपुट था वो हमें रिफंड बैक मिल जाएगा। अब उस रिफंड के प्रोसीजर्स को डिफाइन करने के लिए रूल 89 सीजीएसटी रूल 17 में डिफाइन किया गया, जिसमें कहा गया कि हमें उस अनयूटिलाइज आईटीसी, अब पहला तो ये केस है कि ये केसेस रूल 89 एप्लीकेबल होता है अंडर गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड अंडर एलयूटी कैटेगरी, बिकॉज इन दैट केस ओनली हमें रिफंड को अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज अंडर विद पेमेंट कैटेगरी हमारा रिफंड ऑटोमेटिकली शिपिंग बिल से फाइल हो जाता है। अब एलयूटी वाले केस में जाते हैं तो हमारा जो अनयूटिलाइज आईटीसी है उससे हम रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं। जब अनयूटिलाइज आईटीसी रिफंड के अप्लाई करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है दैट विल बी डेबिटेड फॉर द रिफंड अमाउंट विच वी आर क्लेमिंग। अब क्लेमिंग करने के लिए फॉर्मूला बनाया कि हमें प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा। अब देयर आर मल्टीपल टैक्स पेयर, हर टैक्स पेयर का डोमेस्टिक सप्लाई भी होता है और एक्सपोर्ट सप्लाई भी होता है या फिर ईओयू होता है। अब उस बेसिस पे एक हमारी जो नेट आईटीसी है उसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड किया जाएगा, उसके लिए एक फॉर्मूला डिजाइन किया गया। फॉर्मूला क्या है? टर्नओवर फॉर जीरो रेटेड गुड्स प्लस टर्नओवर सर्विसेज इनटू नेट आईटीसी डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। मींस हमारा जो टोटल टर्नओवर है, जो हमारा नेट आईटीसी है, उसको हमारे प्रोपोर्शनेटली उस पर्टिकुलर टर्नओवर के लिए, जो टर्नओवर हमारा एक्सपोर्ट या जीरो रेटेड गुड्स से रिलेटेड है, उसको हम प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर लेंगे और उसका हम रिफंड अप्लाई कर देंगे। अब नेट आईटीसी क्या है? नेट आईटीसी स्पेसिफिकली रूल 89 ने बताया कि इन केस ऑफ एक्सपोर्ट नेट आईटीसी वुड बी you can say input of goods plus input of services. It specifically excludes capital goods in this case, but under with payment category ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। विदाउट पेमेंट एलयूटी कैटेगरी हमें कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता। आईटीसी ऑन अनयूटिलाइज्ड आईटीसी फॉर कैपिटल गुड्स इज नॉट बीइंग रिफंडेड बैक टू अस। अब टर्नओवर कैसे डिफाइन हो? एक रूल 89(4)(c) एक क्लॉज है जिसमें स्पेसिफिकली कहा गया कि जो टर्नओवर ऑफ गुड्स है, टर्नओवर फॉर जीरो रेटेड गुड्स शुड बी मैक्सिमम टू 1.5 टाइम्स ऑफ द गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय दैट सप्लायर। मींस अगर हमारा वही गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाई हो रहा होता तो उसकी गुड्स की वैल्यू क्या होती और हमने एक्सपोर्ट किया तो क्या वैल्यू है। अब जो हमने डोमेस्टिकली अगर उसको सप्लाई डीम्ड वैल्यू है, नोशनल वैल्यू पे अगर डोमेस्टिकली सप्लाई कर रहे होते तो उसकी 1.5 टाइम्स मैक्सिमम लिमिट है उस टर्नओवर की, मतलब इससे ज्यादा हम उस टर्नओवर की वैल्यू को नहीं ले जा सकते। बट इस कंडीशन को कर्नाटका हाई कोर्ट की एक रूलिंग ने अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया, बिकॉज ये जो कंडीशन है ये हर किसी केस में फॉलो नहीं हो सकती, बिकॉज दे आर मेनी सप्लायर्स जहां पर हमारा गुड्स है, जो हमारे गुड्स हैं वो सिर्फ एक्सपोर्ट होते हैं। दे आर मेनी टाइप ऑफ सप्लायर्स जहाँ पे सिर्फ उनकी डोमेस्टिक सप्लाई होती ही नहीं है, वो एक 100% ईओयू कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब देखते हुए, मल्टीपल चीजों को देखते हुए एक केस लॉ है टॉनबो इमेजिंग। टॉनबो इमेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर क्लॉज को, दैट मींस रूल 89(4)(c) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और ये कहा कि ये मतलब ये रूल इज नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ऑन ऑल द सप्लायर्स, ऑन ओनली एक्सपोर्टर्स। अब उन्होंने बेसिस क्या दिया उस अल्ट्रा वायर्स देने के लिए? उन्होंने कहा बिकॉज वो कह रहा था कि जब एक्सपोर्ट की वैल्यू हमारी थी, वो एक्सपोर्ट का जब टर्नओवर हमारा कम हो जाता है टोटल टर्नओवर, उस रेशियो से हमारा रिफंड वैल्यू हमेशा कम हो रहा था। अब उनको क्या डर था इस क्लॉज को लाने के लिए? वो ये कहते थे, गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन थी? उनकी इंटेंशन शुरू से ये रही है कि जो हम गुड्स डोमेस्टिकली हम सेल कर रहे हैं, अगर हम वो 200 रुपए का सेल कर रहे हैं, ये नहीं कि हम उसको एस्केलेट करके 400 का सेल करें जिससे कि हमें रिफंड वैल्यू ज्यादा मिल जाए, रिफंड अमाउंट ज्यादा मिल जाए, उसको रोकना चाहती थी गवर्नमेंट। बट ये क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज ये कंडीशन हर किसी में नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि हर बंदा डोमेस्टिकली सप्लाई भी कर रहा हो और हमेशा गुड्स जो है वो डोमेस्टिक सप्लाई होने लायक भी हो। इसलिए उन्होंने बेसिक अल्ट्रा वायर्स दिया कि दिस एक पहला कैटेगरी ये है कि ये जो कंडीशन है 89 रूल 89, ये रूल 89 सिर्फ उन पे लगता है जो अंडर एलयूटी सेल करते हैं।
अंडर एलयूटी सेल करते हैं, ठीक है। अब विदाउट विद पेमेंट कैटेगरी में तो कंडीशन ही नहीं है कोई ऐसी, मींस इफ वी आर सेलिंग गुड्स अंडर विद पेमेंट कैटेगरी, तो देयर इज नो सच कंडीशन ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ गुड्स। अब उस केस में तो हमें रिफंड पूरा मिल रहा है। अब और विदाउट पेमेंट में जाते हैं, अंदर एलयूटी जाते हैं, तो ये रिफंड हमारा इसका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो देयर वाज अ they created a discrimination between two classes of exporters, means exporter who were dealing under LUT category, exporter who were dealing under with payment category. Second, they always said, the High Court said that this violated rule Article 14 of the Constitution, that means equality before law. उन्होंने ये कहा कि दो क्लास एक्सपोर्टर उनकी लॉ के सामने सेम कैटेगरी रहेगी, दे आर इक्वलिटी बिफोर लॉ, मींस उस कंडीशन को हम लोगों ने वायलेट किया है। दूसरा, हमेशा गवर्नमेंट चाहती है कि जितना भी एक्सपोर्ट हो दैट शुड बी टैक्स फ्री। अब इस पर्टिकुलर क्लॉज से क्या हो रहा था, एक पार्ट ऑफ हमारा गुड्स वो टैक्स फ्री नहीं हो पा रहा था, बर्डन वाज ऑन दी एक्सपोर्टर, वो टैक्स भी चार्ज नहीं कर रहा है, उसको आईटीसी का बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्टिंग बढ़ रही थी और हमारे एक्सपोर्ट डिग्रेड हो रहे। अब उन्होंने फोर्थ ये क्या उन्होंने कहा, व्हाट इफ द एक्सपोर्टर इज ओनली इन्वॉल्व्ड इन एक्सपोर्टिंग द गुड्स एंड हैव नो डोमेस्टिक सेल्स। पहला कंडीशन में डिस्कस किया, अगर गुड्स ऐसे हैं जो सिर्फ वो एक्सपोर्ट करता है बट वो डोमेस्टिकली कोई सेल नहीं करता है, और सेकंड, कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो इंडिया के लिए बनता ही नहीं है, इंडिया उसे मैन्युफैक्चर तो कर रहा है बट इट इज नॉट फॉर इंडिया, इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इंडिया की डिमांड्स हैं, उसमें फॉल ही नहीं करता। अब वो सारा का सारा जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है वो सारा एक्सपोर्ट होने के लिए कर रहा है। तो ये चार कंडीशन ऐसी थी जिसकी वजह से ये रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन रहा था और जो डिस्क्रिमिनेशन ला रहा था। दैट्स व्हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस को में जाके इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। अब आते हैं हम लोग रिफंड प्रोसेस पे। अब रिफंड प्रोसेस जनरली आप लोग देखते हो, रिफंड अप्लाई करा होगा, पार्टिसिपेंट्स कई होंगे, जिसमें एप्लीकेशन फॉर रिफंड हमारा RFD 01 पे जाता है। RFD 02 में जो डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स हैं इसमें एक्नॉलेजमेंट देते हैं हम लोगों को, और दैट एक्नॉलेजमेंट is to be given is a time bound manner, that is within 15 days of generation of that ARN। जो RFD 01 की ARN है उसके 15 डेज के अंदर RFD 02 के एक्नॉलेजमेंट आ जानी चाहिए। RFD 03 होता है कि इन केस कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है, कोई डेफिशिएंसी मेमो इशू होता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, दे इशू इट इज RFD 03 प्लीज। थैंक यू। RFD 03 में उसको हम लोग डेफिशिएंसी मेमो इशू करते हैं। अब डेफिशिएंसी मेमो इशू होने के बाद, जब डेफिशिएंसी मेमो इशू हो जाता है, उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन है, दैट एप्लीकेशन कंस्टिट्यूट्स टू बी अगेन RFD 01। जो न्यू एप्लीकेशन आएगी RFD 03 के बाद, जब डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी, वो 01 में दोबारा से एप्लीकेशन आएगी और फिर दोबारा से न्यू प्रोसेस से वो स्टार्ट हो जाएगा। अब एक केस ऐसा आता था जब स्टार्टिंग में GST आया कि जो हमारे एक्सपोर्ट रिफंड होते थे, वो हमेशा गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक्सपोर्ट रिफंड्स को ज्यादा टाइम तक रोक नहीं सकते हैं जब तक हमारे वेरिफिकेशन चल रहे हैं। अब जब तक वेरिफिकेशन चल रहे हैं तो उन्होंने बोला कि 90% अमाउंट ऑफ द रिफंड अप्लाइड विल बी प्रोविजनली रिफंडेड टू द टैक्स पेयर। तो जो प्रोविजनल रिफंड मिलता था विद इन 7 डेज, वो RFD 04 में दे देते थे और उसको एप्लीकेशन को फिर आगे उसकी जो डिटेल्स वगैरह होती थी उसको वेरीफाई कंटिन्यूली करते थे। अब कोई ऐसा केस जहां पर हमारे रिफंड्स को ब्लॉक करना चाहती है, या रिफंड मतलब हमारे बनता ही नहीं है, उस केस में शो कॉज नोटिस इशू होता है, वो 08 में इशू हो जाता है, 09 में उसका रिप्लाई दिया जाता है, और फाइनली जो रिफंड ऑर्डर है, आइदर इट बी इन फेवर, आइदर बी इन दी अगेंस्ट, द ऑर्डर विल बी इन RFD 06। और RFD 07 एक एडजस्टमेंट के लिए फॉर्म बनाया गया है। अगर हमारा कोई डिपार्टमेंट की तरफ ड्यू है और रिफंड से उसे गवर्नमेंट एडजस्ट करना चाहती है, तो RFD 07 से उस पर्टिकुलर टैक्स को वो उस रिफंड अमाउंट से एडजस्ट कर लेती है ऑन देयर पार्ट। कमिंग टू दी नेक्स्ट प्रोविजन, वेयर जहां पे गवर्नमेंट के ऊपर टाइम बाउंड मैनर में उनको रिफंड इशू करने की कंडीशंस हैं कि विद इन 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, गवर्नमेंट शुड इशू अ रिफंड और एन ऑर्डर, जिसमें कि या तो फॉर या अगेंस्ट विच एवर इज, जो भी कंडीशन में आती है उसको उन्हें 60 डेज में रिफंड ऑर्डर इशू करना है। इन दिस केस अगर 60 डेज के टाइम बाउंड मैनर को वो फॉलो नहीं कर पाते, देयर इज एप्लीकेबल इंटरेस्ट इन दिस बोथ दी कैटेगरीज। अब इसमें दो केसेस आ जाते हैं, एक आता है ऑर्डर इन पर्सोना एंड ऑर्डर इन रेम। मींस देयर इज समथिंग लाइक कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर है, रिफंड ऑर्डर, हम इसमें केस में जाते हैं, रिफंड हमारा कोई रिफंड अराइज होता है उन केसेस में जिन केसेस में हमारा कोई कह सकते हैं कि हमने कोई अपील अथॉरिटी पे अपील करी,
और हमने किसी डिपार्टमेंट के ऑर्डर के अपील में जाते हैं, और उस अपील के थ्रू हमारे जो रिफंड्स हैं वो मतलब जनरेट होते हैं। उस अपील में हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलता है, और हमें उस पर्टिकुलर अपील के बेसिस पे हमें डिपार्टमेंट को ये रिफंड एप्लीकेशन देते हैं कि ऑन बेसिस ऑफ दैट अपील प्लीज इशू अ रिफंड। एंड उस पर्टिकुलर डेट ऑफ ऑर्डर से, रिफंड एप्लीकेशन से जो हमने रिफंड अप्लाई किया 60 डेज से ऊपर जाता है, तो हमें 6% के इंटरेस्ट अप्लाई मिलती है। इट इज जनरल केसेस, मतलब आइदर हम रिफंड अप्लाई करते हैं या फिर वो किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में आती है, दैट इज 6%। 6% की ब्याज हम लोगों को मिलेगी इनके इफ इट इज लेट देन 60 डेज। प्रैक्टिकली ऐसा मार्केट में कहीं हो नहीं रहा है, रिफंड एप्लीकेशन महीनों तक अटकी रहती है, बट वो ना ब्याज आती है ना कुछ। प्रैक्टिकली इट इज नॉट विनिंग, बट जो लॉ कहता है वो 6% ब्याज के लिए बोलता है। Second condition is if there is a case law, if there is some case which is applicable on another taxpayer, और उसकी वजह से हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है, मीन्स कोई, दिस इज लाइक ऑर्डर इन रेम, देयर इज ऑर्डर इन रेम इन अगेंस्ट सम अदर पर्सन, एंड फॉर दैट एंड अगेन एक जजमेंट आया जिसकी वजह से हमें बेनिफिट मिल रहा है, उन दैट केसेस अगर हम कोई रिफंड अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर जजमेंट को बेस बनाते हुए, इन दैट केस हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि उस पर हमें 9% की इंटरेस्ट मिलती है, जो सेक्शन 56 के बाद डिफाइन की गई। एक सुप्रीम कोर्ट की और रूलिंग है जिसमें हम लोगों को एक एफईएमसी प्रतिभा ज्वाइंट वेंचर में कहा गया, एक नई केस लॉ है जो हमें आपको मतलब बताना सही है। ये भी एक टाइम बाउंड मैनर के लिए है, जो एक डी वैट जिसने दिल्ली वैट एक्ट के सेक्शन 38 को बेस बनाया, जिसमें कहा गया कि अपहेल्ड द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट दैट डिपार्टमेंट मस्ट अडेयर टू द टाइमलाइंस फॉर प्रोसेसिंग रिफंड्स एंड दैट रिफंड्स कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनफोर्सेबल डिमांड्स फॉर टैक्स और ड्यूटी दैट आर पेंडिंग एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। एक इस पर्टिकुलर केस में क्या था कि जो एफईएमसी प्रतिभा ज्वाइंट वेंचर है, इनका रिफंड रोक लिया गया था उस बेसिस पे कि डिमांड कोई एनफोर्सेबल डिमांड है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसकी वजह से उनको रिफंड नहीं दिया गया। अब उन्होंने कहा कि आप किसी भी पर्टिकुलर टैक्स पेयर का रिफंड ऐसे नहीं रोक सकते हैं, एनफोर्सेबल डिमांड, अगर वो एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग वो डिमांड थी ही नहीं। ठीक है ना? इट हेल्ड दैट द डिपार्टमेंट मस्ट स्ट्रिक्टली adhere to the time limit for processing and issuing the refunds. The department does not have any legal right or justification to retain the amount beyond the time manner and limit prescribed under section 38. This section 38 जो हम बता रहे हैं are para-material to section 56 of the CGST Act. The precedent established in the aforementioned case strongly supports for the similar interpretation in the current GST in case of refunds. मतलब इस 60 days की टाइम लिमिट को हम इस पर्टिकुलर केस लॉ से भी सेव कर सकते हैं, और ये जो डी वैट का एक्ट है ये हमारे इस सेम पैरा मटेरियल विद सेक्शन 56 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। उन्होंने स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट डिपार्टमेंट मस्ट अडेयर टू द टाइमलाइन स्टिपुलेटेड देयरइन इन टू फुलफिल द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन व्हिच इज टू एंश्योर द रिफंड्स आर प्रोसेस्ड आर इशूड इन अ टाइमली मैनर। मतलब एक्सपोर्टर्स की वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो, एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने का कोई पेनलाइज न किया जाए, उनके रिफंड्स को इजीली इशू किया जाए। Coming to the next slide. इसमें मैंडेटरी इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड्स, इसमें ये इस पर्टिकुलर केस लॉ में कहा गया कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। अगर हम कोई रिफंड लेट होता है इट इज मैंडेटरी, आइदर हमने उसके लिए अप्लाई किया है रिफंड एप्लीकेशन में या नहीं किया है, या फिर हम लोगों ने अगर कोई रिट एप्लीकेशन फाइल करी है, हम किसी अपील अथॉरिटी के पास गए हैं और वहां पे हमने उसके लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया है, बट इंटरेस्ट फॉर्म्स है स्टैट्यूटरी राइट, एंड अगर रिफंड इज बीइंग डिलेड तो हमें इंटरेस्ट हम एलिजिबल है लेने के लिए। The Honorable Delhi High Court in the case of Raghav Ventures held that a petitioner is entitled to statutory interest at the rate of 6% starting from the date immediately after the expiry of 60 days from the date of receipt of refund application till the date on the refund is credited to the bank account of the petitioner. This case highlights the importance of timely processing of refunds and statutory obligation to pay interest on the delayed refunds. The court clarifies that such interest accrues automatically independent of whether it was explicitly requested the refund application. Means अगर हमने उसे रिक्वेस्ट भी नहीं करी है तो भी उस रिफंड को, उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को मिलने का राइट हमें हमेशा रहता है। It also emphasizes that the right of taxpayer to claim interest on delayed refund as a matter of statutory right, regardless of whether interest was specifically claimed in the initial refund application or not.
Now, from here, the session will be took over by Honorable, you can say, Shivashish. Thank you. Thanks, Akshay. Thank you so much. And in the meanwhile, quickly, hi, Shivashish, how are you doing? Hey, hi, Neha. Perfectly fine. Okay. So we have Rahul Agarwal with us today, who is also a member of Voice of CA. And I would request Rahul to please introduce Shivashish. Rahul, are you here with us? Yes, I'm here. Shivashish is a qualified chartered accountant and a law graduate from Faculty of Law DU. He has worked with Big Four, MNC, and has extensively worked in the field of taxation, and including the making of critical tax position, representation before tax authorities for various multinationals and domestic clients. He has been writing on various technical topics for CA Journal, GST Sutra, Taxman, among others. We are happy to welcome you, Shivashish. Over to you. Thank you, Rahul, for the nice introduction, and thank you, Voice of CA, for giving this opportunity. So, as Honorable Akshay stated regarding certain provisions, I'm going to carry forward the discussion. Now, we understand that under GST, we get the refund of input tax credit, wherein, let us say, we purchase certain items and we get the input tax credit refund. And these are the items which are liable to GST. Now, what happens to excise? Let us say there is a electricity duty. Now, electricity duty is not refunded by way of GST refund. Now, there is another item. Let us say you are paying the tolls for the movement of goods. That toll is also not refunded by way of GST. Whenever you are claiming the refund, you are not getting the claim on account of, let us say, electricity duty, toll charges, or any other duty which are normally not covered by the GST law. For that reason, there is a specific provision under foreign trade policy which says that on account of the infrastructural deficiencies, we are making a provision of getting X percentage of the FOB value on account of exports which are being undertaken by the exporters, and that X percentage basically represents whatever overall other levies are there, like road cess, stamp duty, electricity charges, electricity duty, which are in the nature of duties and taxes, but though not refunded in any other law. For that reason, there is a provision under foreign trade policy. Earlier, that was provided by way of MEIS scheme in case of goods, and in case of services, that was provided by way of SEIS scheme. That name has been changed. Majorly, it is the name of change in the name, and the name has been changed to road tap. And in case of textile sector, it is called ROSCTL. Now, those scripts are provided as a percentage of the FOB value, which is mentioned in the shipping bill. Now, you exports and you get X percentage of that benefit. Now, a question comes that how I can redeem those benefits. So first, these benefits are provided by way of a script that is available on your online IceGate portal. Against those scripts, what you can do is, let us say the value of script is 100 rupees, and that is derived out of X percentage of the FOB value. That 100 rupees can be used for the payment of basic customs duty. You can pay that basic customs duty. Now, let us say I am not an importer, because basic customs duty would be applicable only when I am going to import. What happens if in case I am not an importer, though I am exporting certain goods, because I am domestically procuring those goods? In that case, the law specifically allows transfer of those scripts. Now, for that reason, this topic has been considered in this particular presentation, that what happens to the transfer of those scripts which are provided as a benefit on account of exports under the foreign trade policy. Now, sale of scripts are exempt from GST by virtue of notification, specific notification, which says that sale of scripts is not liable to GST. However, once it becomes exempt, then automatically there is a question which comes whether ITC is required to be reversed, because it has become a exempt supply. For that, a specific explanation has been inserted in GST rules, rule 4243. There is an explanation which is given below to that rule, which says that for the purpose of exempt turnover, we will not consider
value of duty credit scripts, the transfer of duty credit scripts will not be considered as a export turnover, exempt turnover, and accordingly there is no requirement to reverse input tax credit, proportionate value of input tax credit. However, this explanation was inserted in 2022. Now the question comes whether during this intervening period of around 5 years, whether there is a requirement to reverse input tax credit. Now there is an understanding in the market that this is not required to be reversed. First, I actually don't receive any inputs or input services for effecting these particular sale of MAA scripts. Second, there was never any requirement to reverse the input tax credit, SANVAT credit during the service tax time or VAT time, and even in the GST period by way of this explanation. We consider this explanation to be a clarificatory in nature, and accordingly, this is deemed to be applicable with effect from 2017. And for this reason, we say that this ITC reversal on sale of MAA scripts from 2017 to 2022 is not required, and accordingly there is no requirement to reverse input tax credit by treating the explanation to be effective retrospectively. Now going to the next slide. Now next slide is, this is in a way accounting treatment of the exports under LUT and exports with payment of tax. Now, what happens is normally when you are undertaking any export, let us say you are undertaking this export in the month of June. The shipping bill gets filed in the month of July, and the LEO order, the let export order, is also issued in the month of July. So there are timing difference. That can be 1 month or 2 months. Now, how you are going to recognize those exports in your GSTR1 and GSTR3B as the case may be? Mind you, there is a Section 31 which says that before the removal of goods, that is before my goods are getting removed from the factory for the purpose of export, I have to mandatorily raise an invoice. So that mandatory requirement of raising the invoice is there. So for this reason, now I'm going to specify this illustration on the left side. It is recommended to report such invoice in the returns only after receiving the shipping bill details. The reason this is mentioned that the invoice should be reported only when the shipping bill details are received, because when you are exporting under LUT, there is no tax which is required to be paid. And for that reason, even if you are going to defer the reporting of this particular invoice for a month, then also it is fine, because there are no interest consequences, and your details are going to be matched as it is with the details of the shipping bill. For that reason, in case of export under LUT, it is suggested that the details of the invoices should be reported in GSTR1 as and when the copy of shipping bill is there, because as Akshay rightly stated, that these details, even in case of LUT refund, these details of shipping bills are duly verified by the officer, and for that reason, we suggest that these should be reported only when we have the concrete details of shipping bill. Now, in case of with payment of IGST, because I am liable to pay IGST, I am liable to debit my electronic credit ledger or even electronic cash ledger wherever my rate of inputs is less than the rate of output. So let us say I am discharging GST at the rate 12%, and my rate of input is normally at 5%. For that reason, there is certain amount of payment which is required to be made in cash. For that reason, because once you have raised your invoice before movement of goods as per Section 31, your time of supply has already arose for payment of duty liability, because this is a case of export with payment of IGST. And for that reason, even without waiting for the shipping bill, it is suggested that the details of those particular invoice should be reported in GSTR1 as and when the invoice has been issued before the movement of goods. Since we would not be having the details of shipping bill, and for that reason, it is suggested that the invoice can be further amended in GSTR1 by way of once we have the detail of shipping bill. Now going to the next slide, I'm just running through these slides because there is shortage of time also, and this is a bullet webinar, so from that perspective. So case 1 is that the invoice date is in the April month, the shipping bill date is in the month of May, and the EGM date is in the month of June. It is just an example.
April invoice date, shipping bill date in the month of May, and in the month of June, we have the date of let export order or EGM date. Now, in which particular month you are going to consider that particular invoice for the purpose of claiming refund? You have to consider that invoice in the month of April only, because the details of shipping bill and EGM, though required in statement 3 or other in export related whenever we are filing the refund claim, but the determination of refund claim will be determined as per the invoice date, because all of my details are reported as per the invoice in my refund application form. My right to claim the refund starts from the date of invoice, though it has to be further substantiated by way of the fact that actually there is an actual export and there is an actual shipping bill and EGM date. Now, the officer sometimes says that ideally you should consider this claim in the month in which this EGM has been filed, that is in the month of June. Now, when we are going to consider that in the month of June, he is going to say that your invoice was already issued in the month of April. Why you have already forgotten to take your claim in the month of April? And once I'm going to file the claim in the month of April, he's going to say that your EGM is not there. Accordingly, you are not eligible to claim this refund. For that reason, we have to demonstrate that Section 37 requires me to furnish details of all the export invoices. Those export invoices are auto-populated, are verified while filing of GSTR 1. There is a shipping bill, there is a EGM which is there at the time when I am filing this particular refund application, and accordingly my date has to be considered by way of the invoice date. And if required, many times I've seen that people give the affidavits also stating the fact that they have not claimed any refund in the future course and they will not claim the refund. Slide number 17 and 18 is a bit procedural, as in if there is a mismatch while furnishing details of the shipping bill or invoice in GSTR 1, then your IGST refund can be stuck, because the details as per GSTR 1, the details which you furnish of the export invoice in GSTR 1 and the details as per shipping bill is shipping bill as is verified. The details as per shipping bill and as per GSTR 1 is verified by the GST system, and then only automatic refund is being granted. Let us say if there is an invoice number mismatch. In your shipping bill, the invoice number is, let us say, 005, and in your GSTR 1, the invoice number has been reported as 004. In that case, it is going to give an error, and that error has to be rectified by the taxpayer while filing his GST return. He has to correct his details as per the shipping bill. Now, what happens if the time limit has already been expired in terms of Section 37? Because Section 37 allows time limit till November of the following financial year. In that case, I can approach the port and submit a concordance table wherein invoice details as per shipping bills are mentioned and invoice details as per GST return is mentioned. I submit that table to the port of export from where I have undertaken those exports, and the customs officer verify that these details are correct and accordingly process the refund, IGST refund. If you have time to correct the GSTR 1, in that case, you can correct that in the GSTR 1 if in case the time has been expired. Even in the cases of 2017, 18, 19, because that time limit is continuing as per the customs provision, you can file that Annexure A mentioning the details of concordance between both invoice and shipping bill and accordingly claim your refund. Here again is the list of error. Again, this is a procedure part. I'll just come to the last topic of our presentation. So that is the last topic. Now, because IGST refund is automatic, people are getting automatic refunds. So government thought it is really getting automatic, everything. And we don't want to create such ease of business to such a level. For that reason, they thought that IGST refund, no doubt many people are getting. But we think that many people who are not supposed to get that IGST refund, because there are certain flaws which government think are there in the system, in their system. And for that reason, they have created a specific provision wherein the government has given power to DGRM, wherein they can put a red flag on the IceGate portal of that particular exporter. Once that red flag has been put on the IceGate portal of that particular exporter, in that case,
the automatic IGST refunds are not credited into the bank account, then what happens is, now the process I am going to discuss, wherein you have filed a claim for IGST refund, but your refunds are not coming into the bank. So the reason is red flag which has been put in terms of the CBIC instruction by the DGRM. So DGRM uses certain risk parameters to identify. Let us say there are certain defaults in your supply chain. That can be one. You have entered a business transfer agreement wherein you are transferring your assets, everything you have transferred, but there is no e-way bill, because in case of normally business transfer agreement, the assets are transferred as is various basis. Once those are transferred as is various basis, there is no movement of the goods. And once there is no movement of the goods, you are not required to generate e-way bill. But your ITC gets transferred to the recipient. The recipient claims the ITC, and that is also one of the reason of putting red flag on the IceGate portal of the exporter, that you have got the ITC out of business transfer agreement and the amount of ITC is huge, but where is the e-way bill? So that is also one of the reason that this red flag is getting put on the exporter IceGate portal, and he is not getting the refund of IGST. Now, once that red flag is put, because already there are certain shipping bills which are there in the system, because I've reported that in my GSTR 1, then an automatic refund application is being created by the GSTN portal, by the IceGate portal, and the data is transferred to the GSTN portal. So what IceGate portal does is that it notes that there is a red flag. It notes that there is a shipping bill for which IGST claim has been filed, but the refund has not been processed. It is going to transmit all those shipping bills to the GSTN portal. The GSTN portal is going to create an automatic refund application under the heading any other. Now, once that refund application has been created under any other heading, that becomes the responsibility of the jurisdictional officer to process that particular refund application in terms of the law. And the refund is processed in the like manner as if an application under LUT was filed. So IGST refund, there is a red flag, and that application is treated as an application under which refund has been claimed in terms of the LUT application. Now I've discussed this part, and the jurisdictional officer has to process the refund application. And while processing the refund application, because the jurisdictional officer has already verified your credentials, because the red flag was put by a AI system, DGRM system, saying that we are not saying that the ITC is eligible to that particular exporter or not. It is just saying that we think that there is a red flag. This exporter is a risky exporter. You just verify the credentials of those exporter. Because officer is going to verify those credentials of the exporter, he's going to pass a refund sanction order. While passing out that refund sanction order, he has a functionality wherein he can mention that he can suggest to DGRM that I verified his credentials and accordingly I request you to remove the red flag. And once that red flag removal request has been made by the officer to the DGRM system, the red flag is removed and accordingly he becomes eligible for the refund. For the going forward, because he is going to file shipping bills, invoices with IGST, and accordingly he is going to become eligible for the refund. Now there is just few challenges, and this is the last slide, which are there in this particular case. I'm just coming to that particular slide because of shortage of time. So non-creation of refund applications. There is a red flag which has already been put in 2021. The exporter haven't got the refund. Even then, the refund application haven't been created by the GSTN system. There is no refund application which is visible. Now, already exporter with payment of IGST has already debited his electronic credit ledger or cash ledger as the case may be while making the payment, but he haven't got the refund. There is a red flag on the system. He cannot claim that refund by any other mode. And even after that red flag, there is no automatic application which has been created. And for that reason, the refunds are piled up and there is no mechanism from where that particular taxpayer can verify that to which forum he can approach for getting those refund applications at least created so that jurisdictional officer can verify those refund claims. Department is not aware of the SOP. Department normally says that your red flag has already been put by the DGRM system
and who are we to now grant you the refund? Once a higher authority has already put a red flag, now normally we are not capable enough to verify the refund claims. They say that once a central body has verified, normally this is being said by the state officers. When a central authority has put a red flag, now who are we to process this particular refund application, even ignoring the fact that there is a particular SOP which specifically says that those refund has to be processed by the jurisdictional officer. The third thing is that they say that your refund application of 2022, let us say 2022 January shipping bills have been created now in 2024 June. There is already 2 years which have been elapsed in creation of those refund applications. The shipping bill dated January 2022, as Akshay already told, that shipping bill in this particular case is deemed to be an application of refund in case of IGST refunds. Your refund application was already filed in the month of January 2022. Now, after 2.5 years, this application has been created, but we cannot process because it is time barred. If already rejected because it is entirely automated system, the department is not aware that they have to process this refund. Even we are not aware because the taxpayer think that the refund is automatically going to come into the bank account. After 2-3 years, let us say they came to know that our refund is not being getting credited into the bank account, or let us say after 6 months, they have got to know. And by the time refund rejection order has already been issued by the jurisdictional officer, because as and when the application is created, the jurisdictional officer gets a signal that there is a refund application which has been created. He is required to process that refund application within a period of 3 months. And since he has already processed that refund application by way of rejection, and 3 months have already been elapsed for filing the appeal, because you were not aware that this refund application has been created, and for that reason, even your filing of appeal time limit has been expired. You cannot approach the jurisdictional officer, and for that reason, the only option which is there in this particular case is approaching the High Court, saying that I was actually not aware that this refund application has been created, and these are the grounds which can be taken. Otherwise, the last ground which remains is that since I am not getting a cash refund, because refund is essentially a process wherein ITC is converted into the cash. Now, at least I am not getting my cash refund, but I've debited my ITC when I actually filed my GST returns with payment of IGST. At least grant me the recredit of the input tax credit, which was debited. So I'm not claiming the cash refund because I've already ignored the fact that my refund application was created. 3 months have been elapsed. Even the appeal limitation period has been expired. And for that reason, I request the officer that at least allow me to get the recredit of the rejected refund amount, which was actually representing the debit in my electronic credit ledger. With this, I wind up this presentation. Even Sanjay sir is also here. Thank you, sir. Yes, Shivashish. Sir, would you like to give vote of thanks to Shivashish as well as his Akshay? You are on mute. You are on mute. Thank you, CA Neha, for managing today's webinar. First of all, I'm thankful to CA Ayush Agarwal, CA Shivashish ji, and Advocate Akshay Grover ji for their contribution to Voice of CA today in this webinar. Nevertheless, just I wanted to share one small story with the speakers that one day I have gone for somewhere deliberation. So that was my initial year of deliberation when I started in 1998. So when I went there, what I found that only 5 people were there. But those 5 people today, even after 26 years of my deliberation, they are very close friends. They have become just like family. So I am just telling the speakers of the today that sometime, because it is a working day and the speakers are not that famous in the market, people think that new speakers will not be able to deliver
the best of best thing. But let me assure the speakers from my side that Voice of CA YouTube channel is there, and the in channel when it will put and it will be viewed later on, you can see also that your performance. So please do not dishearten. You continue to speak. You have spoken very well. I came with a different name. Actually, I was in institute for some deliberation and meeting of the purchase committee. So I have not been able to join the full of your webinar. So in any case, we are always welcome, and I always says that I'm available 24/7, and we are doing a lot of other things. And the Neha is leading the shop. So with this, a small vote of thanks once again for participant also, and we assure you, the speakers, Shivashis also, that your presentation was excellent. And please send your PPT so that we can send through our viewers through our newsletter also. Thank you very much, Neha. Thank you, sir, Absolutely. for your kind words, sir. Absolutely. There's one question for you, Shivashish, in the Q&A box. I've already replied. You've already replied. Sanchitji, request you to please look at it. Shivaji ji has already replied yes to your question. Do you have an additional question to it? So Rahul is asking, are there no consequences when e-invoice is generated in, let's say, June and SB in July, but reporting of e-invoice in GSTR 1 is made after SB, that is in July? Any criticality that needs to be taken care? And in similar scenario at your end, any change in understanding? It's in the chat box. Not really, Rahul, because we say that this is export under LUT and there was no liability to pay the taxes. And for that reason, I stated that in case of export under LUT, there is no requirement as such. But I mean, obviously there is a requirement, but we understand that out of the process of law, there can be 1-2 month delay in filing of shipping bill and getting a LEO from the authority. For that reason, there can be timing difference in the reporting of invoices. That's it. So Shivas, in this case, since e-invoice has been generated, I believe that it will be auto-populated in GSTR 1. So how do we do it? Do we go and manually remove that invoice Yes. from the GSTR 1? You can. So as to avoid differences with the shipping bill, because once we will have shipping bill after a month, we will have concrete details, final details, and that is a better way of reporting, at least in case of export under LUT. Or otherwise, what you can do is you can report the invoice and thereafter amend those details. That is also a possibility. Okay, but in case of services, there is no such requirement, right? Not really, because in case of services, there is no LEO No or shipping bill. which is involved, right? In Okay, case of and at the services, as and when the invoice is generated, that is mandatorily, I mean, even there is no leniency which is provided out of the process of law. Because in case of export of goods, you say that the goods are moving from factory, then they're going to the port, then the port authorities are verifying those goods, and thereafter, finally, the LEO is issued. So there can be timing difference. Okay, so let's say if the shipping bill is not generated due to some lag on behalf of the supplier, and the goods has been returned back. So in this case, do supplier need to the seller needs to generate or cancel the e-invoice? Cancellation is not allowed. So do they need to generate the credit Cancellation, note? normally time period is 24 hours, and for that reason, there is only option which is left is to issue credit. Okay, so in that case, once the shipping bill is rejected, then only they will show the e-invoice first in GST 1 and then simultaneously show the credit note as well, right? Right, that's correct. And same understanding goes at the year end as well? Yes, year end, because your risk and rewards, it all depends upon just by raising the invoice, your risk and rewards are transferred. In case of export transaction, in my understanding, at least there should be a filing of shipping bill, and for that reason, even in case of year end transaction, this approach can be followed. Okay, thank you. Right, Rahul, thank you. Are there any other questions? We'll wait for another minute if there's another question.
Okay, we shall move on to close the session. Thank you so much, Shivashish, Akshay, and your entire team. Of course, Ayush as well for the first session. And Sanjay sir, thank you for joining us. Thank you, Rahul, for connecting with us today and introducing a speaker for us and for your question. Thanks, Vishal and Rishabh, and all the participants who have joined us on a Monday evening. We shall now close the session. Thank you. Just a minute. Thank you, everyone. Thank you, Neha.